That's right, ghost stories, ladies and gentlemen. आज हमारे साथ हम लोग और आप तो है ही हैं, the one, the only, सुरेश मेनन. Look like somebody, when you did that face. Ooh. One cricketer, I'm forgetting the name. Anyway, hi, and ladies and gentlemen, huge round of applause for Hoezaay Kovako. Thank you. मेरे घर के ऊपर तार, मैं हूँ अक्षय कुमार. I will see you in my car. I'll be in the bar. मेरे ऊपर मत करो वार. You will go शादी very far. के टाइम पे मैं लगाऊंगा आपके ऊपर हार. What? You are a very big star. बस अभी बंद नहीं किया तो तुझे दूंगा 4 मार. Are you with सुरेश? कैसा है? मैं जीत गया. Sorry. कि तू जीत गया? No one will believe it. 40 plus. I'm good. I'm just I needed some help from you. I'm doing it as we speak also. So basically मेरा भी जो एक YouTube चैनल जो people को लगता है ना हैक है करके, हैक नहीं है. उसमें मैं सिर्फ मूवीज डालने वाला हूँ और आप लोग देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, ठीक है. और दूसरा जो मेरा पर्सनल ऐसा करने के लिए मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ. अच्छा. I don't know, you should say देखने के देखो. थोड़ा प्यार देखना से चाहिए. आइए आप लोग देखो. प्लीज देखिए. अच्छी अच्छी फिल्में हैं. तमिल फिल्म्स आएंगे, तेलुगु फिल्म्स आएंगे, सब बहुत सारी. Okay, so people send me also this message, क्या सुरेश मेनन का YouTube channel hack हो गया? It's not hack. नहीं हुआ. He's doing it officially, guys. So please support him. सुरेश मेनन के he's tagged in the description of this video. Even Handle, he makes that face whenever someone's saying nice things about him. जिसमें जावेद अख्तर फेस. Yeah, जावेद अख्तर फेस. सुरेश जी हाय. हेलो. अरे सुरेश जी का पता नहीं कैसी है मैडम. जावेद जी आप इधर क्या बात है? बहुत दिनों के बाद. हाँ, एक हफ्ता, यूजुअली एक हफ्ता होते हैं. बहुत एक हफ्ते में बहुत दिन है. कल भी तो मिले थे. नॉटी. I don't know what you're talking about. But बोनी होगे रेले निस कोमरी का पिस. बोनी कपूर नहीं. Anyway, तो निस ने बोला बोनी होगे रे, where's the ghost expert धोखा. मैं आपको याद दे दूं. अरे ठीक है, 1 मिनट. थैंक यू सो मच. याद दे दूं. सुरेश मेनन का है ये. हाँ, सुरेश मेनन आपका सैंपल पहुंच गया मेरा घर पे. ओह एकदम. मैं पता नहीं आजकल सैंपल सब लोग बॉईल करके बेचते हैं. थोड़ा प्लीज कम सॉल्ट आपका डाइट में. ओके, थैंक यू डॉक्टर. एनीवे, तो निस कॉमेडी का पेज बोल रहा है कि इधर ये वो दिस दैट. आपको याद दिला दो कि सुरेश मेनन ने खुद कंफर्म किया कल, ये मतलब आज या पता नहीं. तो ये एक और हफ्ता ट्राई कर दे. ओनली एट सेशन 88. टेंशन नहीं लेने का भाई बहन लोग. सेशन 88 चल रहा है. 100 तक जाएंगे फॉर श्योर. ऑलराइट, तो हियर वी गो. लीव माय बॉडी. हो गया. सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा मैंने. Okay, Suresh, I'd like you to take over as the host, Suresh, and just tell everyone what the deal is with, the description and what they are do. What is happening here on the stream? क्या होता है इधर? अब मैं अपना प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहा था और तुमने मुझे वहीं पे ठोक दिया. आप वहां से कर दो. तो मुझे सिर्फ ये बोलना था कि जो वीडियोस मेरे पर्सनल वीडियोस है उसको मैं उस चैनल से डाउनलोड करके मेरा नया लॉर्ड मेनन 10 करके चैनल में डालना चाहता हूँ. वो किससे करूंगा? I don't know if this is the right age to be experimenting with YouTube. नहीं, मुझे फॉलोअर्स से कोई लेन देन नहीं है, लेना देना है ही नहीं फॉलो करे तो भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है. मैं पैसे दे के फॉलोअर्स नहीं खरीद रहा हूँ. मेरे जितने भी लॉयल फॉलोअर्स है, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल. What are you doing?
बस ऐसे ही पागल हो गया थोड़ा। Anyway, और uh, देखिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लिंक देखिए और लिंक पे आके जोड़ जाइए हमारे साथ जूम में, और उसके बाद आपके गोस्ट स्टोरीज को हम ले लेंगे। और जिसको भी अगर कुछ अपने बारे में बताना है तो प्लीज आपका भी लिंक डाल दीजिए इसमें चैट पे, ठीक है? I feel like हरामी you were चैट है। you were almost going to break into। और ये मिक्सर ग्राइंडर जो है एकदम सस्ता प्राइस में आपको अभी मिल सकता है, अभी इसी और ये वक्त 4 रन। ये नंबर पे कॉल कीजिएगा। Anyway, big hello to everybody from Harami chat। सुरेश मेनन, we are coming back to you sir, just one moment, finish the initial thing। बाकी स्ट्रीम आपका ही है बाकी सर, you से know। मेरे को, कैन आई ऑल्सो प्रमोट द एड दैट आई डन विद कीकू द कूलेस्ट थर्ड एम्पायर वर्क ऑफ फ्रॉम होम? कोर्स सर, ये आपका ही स्ट्रीम है, आपको जो करना है करो। मैं सिर्फ ये थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूँ क्योंकि मैंने लिखा, मैंने बस। ओके, कमेंट्री भी मेरा मेरा, क्या बात है। प्रोड्यूस भी मैंने किया, मेरे कंपनी आई ने। होप कुछ गलत नहीं हो जाता अभी। इतने ठीक है दिनों से बस बस। आपने अपने स्क्रिप्ट नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं होगा सब। हाँ बोलिए। बोल ही रही थी अरे सुरेश जी, मैडम आपकी सॉरी। आवाज सुन के अभी। हाँ हाँ, हाँ। अजीब है, मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन पकौड़ा लहसुन बोलते ओह दिस इज फॉर द विस्किस शिरीष, शिरीष जी एंड जोसे जी, जोश ओके। जी। देखो, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अंदर आइए, हमें अपना गोस्ट स्टोरीज बताइए। तो मानते नहीं है भूत भूत में, हम लोग ऐसे हंसने के लिए सब करते हैं ये स्ट्रीम, बट थोड़ा बात कर सकते हैं हम लोग। और अगर आपको गोस्ट स्टोरी भी नहीं बोलना, सिर्फ हाय हेलो करना है, वो भी कर सकते हैं। ये स्ट्रीम पे कुछ भी चलता है क्योंकि कोई नहीं देखता है, तो इधर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए काफ़ी राइप है ये जगह। अपना घर का टूर दे सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो ना सुरेश। बिल्कुल बिल्कुल, आप थैंक यू। जो चाहे कर सकते हैं, आपको बाथरूम जाना बीच में वो भी कर सकते हैं। वो मत लेकिन दिखाइए, हाँ। मुद्दा मत भूलिएगा कि यहाँ पर आके भूत प्रेत के बारे में बात करेंगे, और प्लीज डरावना स्टोरीज मत सुनाइए, मैं थोड़ा डरने लग गया हूँ आजकल। नहीं बस सर, इतना ही है। वही चाहिए हम लोग को, वही डरावना ही चाहिए। स्टोरीज हम लोग ठीक है कब तो से ढूंढ वही रहे वही सुनाइए, वही सुनाइए हमें। हैं। ओके। ओह सॉरी। आप यू स्पाइंग ऑन मी सुरेश जी, हम लोग साथ में ही जस्ट चेक कर रहा था कितने लोग आए हैं। लेव। ओह। नहीं, थोड़ा वापस आ गए, चलो तो शुरू करते सर। एनी शुरू अपडेट्स करते। यू वांट टू डू? लेट्स गेट द यूजुअल स्टफ आउट ऑफ द वे। सिरिल किधर है, किधर है? हाँ, सिरिल जॉनी लिव्स किधर है, है? माल किधर है, सिरिल किधर है? ओह। हाँ, सिरिल। सिरिल किधर है, किधर है सिरिल? हाँ। बताओ बताओ। लास्ट टाइम Oh, ही I सेड think I think he spoke to me, and honestly, let me share यू this थिंक with ही the स्पोक टू यू। मतलब yeah, क्या because हुआ? वो थोड़ा एकदम खुफिया जगह से बात कर रहा था, और वो बोल रहा था कि इज ए लिटिल बिट अपसेट क्योंकि उसको उसका 50% मिला नहीं। Those who follow हेरा फेरी, they'll know the reference to 50%, बस। Thank you. लिसन, बट आई बिन पेइंग ऑल इन किसेस, सो What? 50% में ज्यादा कुछ क्या फर्क पड़ता है उसको। That's why I'm doing it for free. ओके चल, बहुत हो गया। रेडी, लेट्स चल। स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है। कौन पहली होता है कहानी। फिर। बाप रे। ऑलराइट, आज का बोनी होने ही वाला है। अमृता गिरीश। माय वीडियोस पीक इज, दिस इज द पीक नहीं है, ये वैली का बॉटम है। माय क्या? गॉड, अमृता गिरीश। कम इन अमृता गिरीश। ओ माय कमेंट गॉड, व्हाट आर वी कमेंट। लुकिंग एट? In the dark, it looks like someone's holding walnuts up in the dark. I can't tell. Hello, Amrita Girish. That is My hand is on the button. that's a Hello. Arey, one second. What is that? That's it's a trying to show us drawing. something. No, it's not a drawing. It's a figurine Acha. of a This, spaceman. they speak in figurines. Is that Transformer? Transformer. Thank you so Yeah. much for showing us that. This is a great way, a Are you weird going way to to start the speak? This is a stream. ghost story. Something you're going to say? Yeah. All right, Yeah. Amrita, that was great. Very Oh, interesting. Amrita, of course, seeing us how we are as it's kids. quite. Sometimes you just show kids figurines like that and they वो Oh लोग खुश yeah. हो जाते हैं। Okay. Quite rude also. You just shut her off. Anyway, ठीक है, आगे बढ़ते हुए। What are you talking about? Oh God. Pulling in the next caller, it's Mahi ji. Let's see how this goes. Mahi ji. Hi, sir. Oh my God, Hello. he's Good scared. morning. Arey, with the
जूनियर जेठालाल यू आर स्टिल मेकिंग वीडियोस? क्या कर रहे हैं तुम लोग? तो हम लोग वीडियो कर रहे थे, जस्ट अभी वीडियो कंप्लीट किया। वाओ मैन, द कंसिस्टेंसी, आई मीन आई एम फीलिंग बैड। हमारा मैं आई शुड बी लाइक दिस क्रेजी एवरी टाइम वी कॉल यू गाइस यू आर शूटिंग वीडियोस। क्या चल रहा है? एवरी टाइम लाइक अरे लोग कभी पूछ रहे थे, आपने अपना लिंक नहीं डाला डिस्क्रिप्शन में। सुरेश आपने भी नहीं डाला। हाँ हाँ, वो सॉरी, मैंने भी नहीं डाला। क्या नहीं, है मैं आपका सोची हैंडल? थी हो गया था ना इसके लिए, फिर नहीं डाला था। डाल दो डाल दो, वी डाल वांट टू वॉच ऑल दीस किड्स एंड ऑल। तो अभी आप कितना बज रहा है वहाँ पे? भी 10 ही बज रहा है ना? हाँ हाँ, 9:41, जस्ट नौ चेकिंग। बजकर 41 मिनट क्या बात है? तो आज कब? आप भूत के बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, भूत भूत भूत। बहुत हाँ सुनाइए अद्भुत। सुनाइए। तो ये एक्चुअली ना, मैं कोलकाता रहती हूँ फॉर माई फर्दर स्टडीज। ओके। तो कोलकाता का ये एक एक्सपीरियंस है। तो मैं जहाँ लाइक फ्लैट में रहती हूँ, तो भाभी ने मुझे बताया उनका एक्सपीरियंस। तो कोलकाता में ना हॉन्टेड वाली चीजें बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ना बहुत पुरानी वाली घर रहती है, ओ मतलब ऐसे चीज बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ? जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके पास में ही और एक बोलते हैं ना असम पैटर्न, एक मतलब नॉर्मल जो एक घर रहता है, आरसीसी बिल्डिंग छोड़ के नॉर्मल वाला जो घर, वो एक उनके सेम मतलब आंगन में ही था एक। तो अ, उस बिल्डिंग में उनकी वो एक बच्ची रहती थी, उसके मम्मी पापा। और अपस्टेयर्स बंद था, क्योंकि उनकी जो लाइक बहुत दूर के रिश्तेदार है, मासी, उन्होंने एक बार सुसाइड करके उनका डेथ हो गया था ऊपर में। ओ, तो उसके हे बाद भगवान। से ऊपर वाला जो फ्लोर है, बहुत आवाज आती थी। तो बच्ची कब चली जाएगी, मतलब वो सुसाइड की तो उस टाइम में ऊपर में वैसा कुछ है उनका। हम्म, तो तब से वो सीढ़ी वाला जो जगह है ना, वो फुल ब्लॉक हो गया है, फुल सीमेंट से पूरा ब्लॉक कर दिया वो पूरा फ्लोर। सेम। तो वो जो नॉर्मल वाला जो घर था, उसके वहां पर उसकी एक दादी रहती है, उसकी एक पापा की बहन रहती है। तो उसका उस दिन बर्थडे था, बर्थडे वाले रात के दिन वो गई थी उसके पापा की दीदी क्या हो गई थी, मतलब उनकी दीदी उसकी माँ, बुआ है। तो उनके यहाँ गई थी। तो उन्होंने बोला कि कल तो तू स्कूल जाएगी, स्कूल से घर आने से पहले तू मेरे घर आ जाना, नहीं तो तू फिर बिजी हो जाएगी, उससे पहले मेरे घर में खीर खा के चली जाना तू। तो वो आई थी खीर खाने, स्कूल से आके आ गई थी। तो खीर खाने आई। तो खीर खाने जब गई तो देखती है कि अलग ही कुछ देखती है। वो जब दरवाजा खोलती है, देखती है किचन में उसकी जो दीदी है, उसकी जो दीदी की मम्मी है, वो ऐसे अपने ऊपर केरोसिन डाल के वो जल जा रही है। वो वो बोल रही है तुम अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, मतलब वो भी उनको बुला रही है कि तुम भी अंदर आओ, मैं तुमको ऐसा जलाऊंगी, ऐसा ऐसा बोल रही है वो। केरोसिन पार्टी, हाँ। जेठा भाई अपना कान बंद कर दे। हाँ। हाँ, वो बेचारा बेचारा उसको उसको तुम भी अंदर आओ, तुम भी अंदर आओ। तो वो बोले कि नहीं मासी, आप क्यों जल रही हो, क्यों जल रही हो। तो बोले नहीं, तुम भी आओ, तुम भी, हम लोग एक साथ अपने शरीर में केरोसिन डालेंगे। तो वो देखती है। तो वो जब सामने आती है ना, तो वो देखती है वो जो उनकी जो पहले जो मासी का डेथ हुआ सुसाइड होके, हम्म, वो उनको फोर्स करती है कि तुम अपने ऊपर केरोसिन डालो। तो वो बोल रही थी कि तुम मत आओ अंदर, मत आओ। वो बोल रही कि नहीं, तुम अंदर आओ, तुम उसके साथ केरोसिन डालो अपने बॉडी में। तो हाय, उन्होंने उसको धक्का मार के दरवाजे से गिराया। तो कुछ देर बाद उन लोग के मम्मी पापा ने, इतना देर हो गया, उसको तो आ जाना चाहिए था इस मतलब स्कूल से, इतना देर क्यों नहीं आई वो। उन लोग जाके देखते वो बेहोश पड़ी है, मतलब वो किचन के बाहर। और फुल किचन जला हुआ है, वो फुल बर्न हो गया है। माय गॉड। तो उसको उठा के रूम में लेके गए, उनको सब कुछ उनका कार्यक्रम सब कुछ किया गया। तो उसको करने के बाद फिर उसको पूछा कि क्या हुआ, क्या देखा तुमने। तो उसने तब बोला कि मुझे तो वो मासी तो बुला रही थी, और वो दीदा को भी जला रही थी, बोल रही थी कि तुम भी आओ उनके साथ, तुम भी जलो। सब लोग जल रहे तो हैं। उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद उसको बहुत मतलब ख्याल करके रखा हुआ। तो जो उनके जो दीदी थी ना, उनको उनके घर में ला लिया गया
कि वो तो अकेली हो गई, उनकी मम्मी का तो डेथ हो गया है, तो वो घर फुल ब्लॉक कर दिया उन लोग ने, मतलब ताला लगा दिया, अभी उस घर में कोई नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली। हम्म। हाँ, तो वो करने के बाद मतलब उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ते थे। तो उसने, उनकी मम्मी ने बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, उनकी दीदी को बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं और उसके पापा जा रहे हैं उसके स्कूल में, उसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो उसको तुम ख्याल करके रखना, कहीं पर अगर वो जाए भी तुम जाना उसके साथ। तो दीदी ने बोला ठीक है होगा। और जाने के बाद तो क्या हुआ, दीदी ने बोला कि तुम, वो बच्चे को बोला कि तुम बैठो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो जस्ट वॉशरूम पे गई, वॉशरूम से निकलने के बाद शी जस्ट ब्लैंक आउट, लाइक कहाँ गई वो है ही नहीं घर में। तो उसको आ गया दिमाग कि वो कहीं नहीं, वही पड़ गई होगी, उसी घर में ही गई होगी। जानने के बाद वो देखती है कि फुल ग्रिल खुला हुआ है, और उसकी जो जो जिनका डेथ हो गया था ना, उनकी मम्मी, हाँ। उनकी मम्मी को बैठी हुई देखती है। वो खीर का जो बाटी है, उस कटोरे में वो खून देखती, फुल रेड, और वही खीर वो बच्ची को खिला रही है बैठ के। वो दीदी तो वो देख के बेहोश हो गई। फिर उनके मम्मी पापा आए, उनको लेके गए। उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम लोग उस घर में क्यों गए, तुम लोग को मना किया था ना उसको देखने के लिए, तुम लोग को हम्म। नहीं जाना है वहां। फिर बोलते कि मैं तो देख के तो भी देख नहीं पाई कि मेरी मम्मी बैठी हुई है, और मतलब उसको खीर वाला, खून वाला खीर खून खिला वाला रही है। खीर। हाँ। तो वो बच्ची बोल रही कि तो मुझे तो दीदा ऐसे बुला कर लेकर गई थी, नानी बोली कि आओ आओ आओ, तुम्हें तो तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुमको खीर नहीं खिला पाई, ये तो मेरा एक लास्ट बोला रह गया था, तुमको बिना खिलाए तो मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी, इसके लिए उसके पास गई थी उस घर में खीर खिलाने। अरे लिटरली वो सुन के मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए थे रात को। बाप रे। हम फुल रियल। मेरा घर में काफी घुस गए। बट मेरे को एक गाना याद आया। वो जिस तरीके से दोनों लोग जला रहे थे एक दूसरे को, आई थॉट कि देवर फेवरेट सॉन्ग मस्ट बी तुम भी जलो हम भी जले जलते रहे जिंदगी। बाप रे, काफी मॉर्बिड या परिस्थितियों से करेक्ट, एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था। अनकाउंट ने भी सेम चीज बोले, दिस इज एक्चुअली हॉरिफिक एंड इंटेंस, बंद करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज फॉर दिस स्ट्रीम वी हैव एवर रिसीव्ड। माही जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। और भाई जी, जस्ट बिफोर यू गो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। ये स्टोरी आपको किसी ने बताया, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। हाँ करेक्ट, मैं जस्ट चेकिंग। ऑब्वियसली फिर आप कभी उस घर पे गए नहीं? नहीं 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 नहीं, हाँ। ऐसे ही बहुत करती हूँ मैं। मुझे और भाभी ने मतलब बोला कि ऐसा, मैं ठीक ऐसे ही है। बहुत वो, मतलब मुझे स्टोरीज चाहिए होते हैं, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत नहीं, पसंद है। लेकिन जूनियर जेठालाल बेचारा, ही विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली आफ्टर हियरिंग ऑल दिस अरे स्टफ। सर, उनका तो मूछ है, वो इज 35 years old. He was actually making such funny faces behind. He was making me laugh in the beginning. तो मत किया कर ऐसा, वो ऐसा करता है, बहुत बदमाश है वो सीरियस ऐसा करता है, उसको पता है, वो बदमाश। कुछ बिलीव नहीं करते हमारी तरह। टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ ठीक लक है। एंड कीप शूटिंग योर बाय। वीडियोस। 1 बजे आप बंद करो। ऑलराइट, टेक नहीं नहीं, केयर। बाय। बाय, मैं सी यू। वीडियो डाल दूंगी, आप देख लेना सर प्लीज प्लीज। लिंक्स भी जरूर। डाल दीजिए। सब हमारे चलिए हरामी चैट वाले कमेंट करेंगे, फिर आप पर अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे। बट क्या बात है, बाप रे। वेरी इंटेंस। हाँ। ओह, बोनी हो गए रिले। दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द स्ट्रीम एज यूजुअल। Yeah, it was quite an intense story. My goodness. Yeah. So here we go. Now we can tell people that you click the description of this video, you will find a link there. अंदर आके आप हमें अपना ghost stories बता सकते हैं. And Suresh sir will try to dissect it. We'll try to explain it. We'll try to laugh nervously. ये सब होता रहता है. Yeah. This obviously is a classic case of somebody trying to scare my a very naughty girl. So Hmm. the grandma, somebody has told her the story so that she won't go to the neighbor's house or wherever this house is constantly. T-shirt पे कुछ नहीं. T-shirt? नहीं, वो It's कोई तो just खड़ा है तेरे टी-शर्ट spider. में। वो मैं ही हूँ. हाँ। All right. Let's see what's going on. Suresh, somebody was saying the बीटरूट खीर। streams Hmm. streams are getting shorter and shorter. Today So we'll we'll be do a ending. marathon one at 4 a.m. No, I was going to say today we'll end at 10 o'clock. No, Yes, Mongolian girl is back connecting to audio. this stream is sponsored by WD-40.
This call is from Australia. WD-40. I use it for cooking. I use it for fixing broken bones, any open wounds. There's nothing you can't do with WD-40. Poll karenge. Yes, I did say we'd do that, but from the next one, I don't know exactly क्या कर रहा है. नहीं, this is not happening. Maybe internet थोड़ा What? कम है उधर. Wherever this person is calling us From from. Australia. I remember. You My remember boyfriend had everything. got in touch. See there you All go. right. All right. Good evening, sir. Hey, how you doing? Good evening and welcome to the debate. Hi guys. Hi, Sorry. good evening. Good evening. Hi guys. All right. Where do you see Okay, yourself so in 5 years? I mean, what ghost story do you have? yes, I have a ghost story from Grand Canyon. I told this story last time, but I Yeah, if you butchered guys it. It's her remember. story. So yeah. Okay. Yeah. Okay. So Okay. I went to Grand Give rating Canyon. first. Rating first, I would say it's 7 out of 10. Okay. But I love the way he but- said rating दीजिए आप पहले, as if we're very Please. serious about it. He's like rating दीजिए. Please, all right, continue. so yeah, so I went to Grand Canyon like for 3 months. It was summer program, and then I was working there as a housekeeper, and then random hotels, and then that Grand Canyon. If I give you more context and background, it kind of consists of 4 or 5 different sub cities like within the Grand Canyon, and then each that sub-region have different types of hotels, like Okay. starting from a little like motel for backpackers and then going up to like modern Got it. hotel, something like that. So yeah. And then every day we had like different rosters. So one day I would work in that big like modern hotels, one day in the backpacker motels and stuff like that. And then we had one native old lady who would never talk to us. Like she would never talk to us. And then her roster was like constant. She always worked in one hotel, like little hotel, and then her roster never changed. And while everyone else has changed, so we worked in different like sections. And then one day, she got sick. So, oh no, before that, one day I worked as a supplier, distributor. So I was like going with new towels and bed sheets and our shampoo or conditioner. So like going around and asking people whether they need something. And then where she worked was like a 1-story place with 16 rooms. So like eight rooms on 2 sides, and then one suite on the back. And then one day I went, like I was a distributor, and then was calling her whether she needs something, but then she never answered to me. So I went inside the suite, and she was working there. And then I could hear that she was talking to someone, talking and laughing and smiling, like they're literally like chit-chatting. And I went inside asking like, hello, hi, everything. But then she was just standing alone and doing the bed sheets and everything. And then the moment I came in, she like literally screamed at me like, go out, I don't need anything and stuff like that. And then I was like, okay, fine. She was always not nice to everyone, and I'm like, okay, fine. And then after like 2 months, last month, she got sick. So we were having like the roster in that section. And then one day I went to her section and I started working like from those little 8 rooms. So I never went to that suite. And then while I was like cleaning those rooms, I was like, fine. I didn't think anything. I forgot that incident with her that a few months ago. And then suddenly, like, I started like having like the goosebump, that feeling, like that feeling when you like feel something behind you, or like very like weird feeling. And then like heart started like pounding,
and then that goosebump and shivering, and then like, even hands started shaking and everything. And then I suddenly started, like, I remembered that she was talking to someone in that, alone in that room. And then I finally like finished all of those little rooms and then went into the suite, and I could see that that one was a really nice room, and then there were like portraits hanging on the walls, and like the old portraits with black and white, and then family like literally staring at you without a smile and everything. And then I could see that that place, I don't remember the name now, but it was like, for example, like Peter's Motel or something like that. And then those portraits had like Peter's family, so like Jim's Peters with her wife and the son and everyone, and then all like wearing jackets, dress, black and white, not smiling, looking at you. And they were like years of their like life, like, and it was 876. So it was that old building, and the whole family lived there. And then they reported that everything was just there, like stayed as it was. And then I don't remember how I cleaned that suite and everyone. And the moment I remember was I was out of that room. And then like the moment I finished and was out, like finally I could like literally breathe. And then it was such a relief. And then I kind of went to the manager after my work, and then I told what happened. And then he said like, yeah, like that's why we never like put someone else to clean that thing. It's like her section. And then she's been working in that place for 30 years. So since her, like she was young, so she was just stayed there and worked in that place. And then yeah, that's what happened. And then the Grand Canyon itself is like very beautiful place, but also it had a lot of like random incidents that even for just 3 months, there were like one incident when we could see that they started like throwing one mattress from like upstairs to down to the ground. And then we were wondering why they would suddenly like change the mattress. So because the mattress is like this big, they couldn't do it like with the lift or stairs. So they could see like they could just like from 7th floor, for example, It came flying. Just to throw it. And then we were asking why you're changing the mattress. And then they say like, yeah, someone like kind of committed suicide in the room, so they just changing the mattress. And then people working there, like they were saying, Grand Canyon is quite famous for people who wants to do like end their life. And then we had this kind of alarm beeping like once in a while, and then no, like it's not fire or something, not firefighters coming or something, and but it was like alarm beeping. And they said every time who like kind of jumps to the canyon, that time that like siren like goes like that. But yeah, so yeah, that the whole Grand Canyon, that the city is just a bit creepy but beautiful. But beautiful. But beautiful. But yeah, it's like a like beautiful and free. So whoever like decides to do something is like, okay, set me free. And see, I got a theory. People who do commit suicide in Grand Canyon, they go down. तो भूत नीचे होगा, ऊपर नहीं. So the ghost will be down, not upstairs. But वो भूत उड़ सकता है ना सुरेश? नहीं, भूत नहीं उड़ सकते. वो नीचे, वो भूत भी उसको क्या मालूम, ज्योग्राफी थोड़ी मालूम रहेगा. तो भूत विल थिंक कि यार अभी नीचे हो तो नीचे है, स्केयर पीपल. And then I got another theory. You should have stopped at stream number 50. Yeah, sorry, what? No,
I got another theory. Maybe this lady who was cleaning up the room, she pretends to talk like that because everyone who comes to that room and whenever she's doing it, she gets better tips. So she didn't want to share the tips with anyone. So she pretends that there's Yeah. somebody in the room. He's consistent with his theory. He had this last time. Last time also. See, I'm telling you, that's why. लोग ये स्ट्रीम एक बार भी नहीं देखते, but stories at least 2 बार होते हैं. Anyway, अच्छा है ना? thank you I'm not guys. sure about like your theory, but yeah. Thanks for sharing that with us. Very intense, deep, because Yeah. of the Grand And Canyon. there goes my plan to go to Grand Canyon. मैं नहीं जा रहा हूँ. All right, take care, guys. मैं Thanks for खंडाला sharing. जा रहा हूँ. I'm going to Thank you. Khandala. Thank you for Bye-bye. having Bye bye. us. Thank Good you. Bye bye. Bye. Khandala. Good night. I'm going to Khandala. हाँ उधर भी है ना ग्रैंड कैनियन जैसा. Very nice. So someone was saying कि सुरेश पूरा synopsis देगा अभी story का. हाँ. But correct. there's no story time, so we'll just move नहीं on मैं दे quickly. सकता हूँ. Because last time I remember very clearly. He had come last stream में ही आके बताया था उसने. You know, and he wanted her to be there, but she was waiting and सोने गई थी. That's why she came back again and said the whole story. उसने God, दो oh तीन गलती yeah. किया छोटा छोटा. Acha, this is like some say Hoezaay delete channel after this. Oh. Connecting to Yes. audio. Rohan Gaur, I think there's somebody Samyak else who's trying to. has contacted us from the afterlife. Samyak, if you can hear this, give us a sign. Yes. Hi. Wow, उधर that's पे pretty सम्यक clear क्या sign. है? Oh, one second. I was not expecting this. One second. Thank you, Vishal Anand. Summarize. I knew you'd read that. Suresh. He deserved it. हमारे फादर को जाके बोल. Samyak. Welcome, sir. काफी Hi. foggy है जहाँ पे आप हो. One second. ये मैं ईमेल नहीं भेज रहा था. I was just posting to Instagram कि अपना स्ट्रीम चल रहा है. हाँ. सब ठीक सम्यक कैसे है भाई? Yes. Nice. किधर से? I'm fine. How are you? चल रहा है I'm भाई. from I'm from Kolkata and but right now in Bangalore. केमन अच्छो? खूब भालो. Enchilada. हाँ सौ क्या? Yeah, some 4 different languages all at the same time. You guys are another level. But Samyak, you have a ghost story for us? Yes. Is it I have. scary? उसमें भूत है? हाँ भूत है but scary. I'm not sure. Oh But no. yeah. ठीक है. Not to worry. One and a half are left. Go for it, sir. सुनाइए. Okay, so this is a story I heard from my mom. So firstly, I don't believe in ghosts and all. I'm confused about it, but risk ले लेने का. So that's out of the way. Correct. बिल्कुल Now, बिल्कुल. but my mom believes in all of this. So this is a story I heard from my mom. So it is time of 1970s there in Calcutta, and there were Naxal movements in there. So it was a very disturbing time for Calcutta. And what was happening was police was encountering anyone who was supporting those movement or not supporting. They were just doing the encounters and stuff. It was very disturbing. So both sides of the story is there. So that's fine. But one day what happened in the night, it was very tough for anyone to go outside their house and all of that. One day, my mom was there, my grandfather was there, and grandmother, and my mom's elder sister. 4 of them were living in the house. And my grandfather, he was a teacher. He came back after one tuition at night at around 9:30, suppose. And he just came back, and the police thought that some protester, someone is coming back from there. And then they started knocking to our door. And my grandfather was trying to open the door, but everyone was like, don't open it. They will just beat you first, then they will ask any questions, because the time was very disturbing, very troublesome time. So anyone can tell that. So it was very, very tough. So they started praying and all of that. And police then don't sense danger, so it's not that dangerous, but okay. Police then said, let's burn this house. Let's just do this. And they were most of them were drunk also. So it was a very that thing. My mom and everyone got scared. My grandfather tried to open, but everyone said, please don't open it. First they will beat you or they might shoot you also. Now they threw petrol on our house.
And they start, my mother and my mother's elder sister, so my mosi and all of them started smelling the petrol. And my mother's uncle, he then said, "Don't worry, I am here. Chinta Korishna," meaning don't worry, I am there. After that, like 1 or 2 minutes, it started raining heavily. It started raining like cats and dogs, and it was winter. It was December. My mom told me this. It was December because it was my mom's after my just 2 3 days after my mom's birthday. So it was December. There was normally no rain in December in Calcutta, but it started raining heavily and heavily, and then it got scattered. So nothing happened to them. Now the thing is, after all this happened, then they realized their uncle, my mom's uncle, was not supposed to be there in the room. He lives separately. And after that day and the next day morning, they found out that my mom's uncle, he passed away on the just before the same day. Like when they heard, my mom heard actually, none of them heard. My mom heard that her uncle is saying that don't worry, I am here. And next day they are listening that he has passed away. So it was pretty. shit. I don't know how what to believe and not, but this is what my mom said, and she believes that he was there in spirit to help them out. Whoa. Wow. Very interesting Came to story. help. But a lot of people do tell stories like exactly like this. Yes, No? exactly. That's the thing. Lot of time I heard about this kind of stories in your stream only. Is it the Yeah. trauma from losing someone? Is it Udit? What? Narayan? No, I was just connecting words together. But Samyak, okay. thank you for sharing that with us. As usual, we don't know anything, but that Nice was a story. good story. That's a good story. Okay. And now I feel like I crying got in because so इतने सालों के बाद एक अच्छा story. शांत हो जा बालक. I just came in so suddenly. I was thinking to Same. just showing my fan and then say it's a huge fan and start the video like that. But it's all of a sudden it started. आपने So नहीं किया. Anyway, Samyak. Thank you, buddy. Great story. thank you, Nerving. thank you. Take care. All right. Bye-bye. Bye. Bye, Samyak. Feels good to know that maybe there was some No. kind of No, Nikhil, I'm not lost. someone helping. I'm searching for Vishal in the chat. So there we go, guys. Since we, after a long time, have actually received some kind of a ghost story on the stream, let us know your rating for this story. What do you think of that story? Please drop. If you think it is a good story, drop a brinjal. सुरेश वो क्या आवाज आता रहता है तुम्हारे साइड से प्रो? I heard it again. Bless you. They say you're in good health if this keeps happening to you. ठीक है. So yeah, so like I was saying, if you like that story, drop brinjals in the chat. If you thought it was not a good story, you can put peaches. Vishal, I don't abuse. एक सेकंड. सुरेश और विशाल का भी शुरू होने वाला है इधर. विशाल आनंद जो भी है, माफ करना भाई, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है. क्या हुआ? ठीक है. make the same even Rainbow also. विशाल तेरा आनंद हो जाएगा. सुरेश, behave yourself. All right. आगे जाने से पहले मैं आई प्रिया दत्ता जी आएंगे बस थोड़ी देर में. यश, थैंक यू यश. I always say यश, I never say no. So Himani Penuli says, hi Huku, hi Josie, सुरेश जी को प्रणाम, सिरिल द हैमस्टर को भी लऊ. Oh, thank God. विशाल जी को प्रणाम, attention seeker. वो डिस्कनेक्ट हो गया. Big fan connected since first story. Also love the short funny videos you make. My first super chat तो शगुन का पैसा, हार्ट emoji, ring emoji. अरे मेरा हो गया शादी. और एक बच्चे का emoji है. ये कैसा proposal है? But Himani, thank you so much for your message. कितना sweet हो आप. Rashmi Sridhara says, Hoezaay, please give a shout out to Rohil. He loves you. रोहिल, I love you too. Mwing, 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 mwing. रोहिल के लिए. और
सिद्धार्थ को हाय ये मेरा नया वीडियो मैं बना रहा हूँ, हाय so आजा आएगा. Just trying to filter catch the filter. पर नहीं थी. ठीक है, ये आएगा इस मंडे को. वापस आ गया मैं गेम में, मैदान में आ गया मैं थोड़ा खेलने के लिए. और कुछ उधर इधर था नहीं, वो चले गए वो लोग. अरे हाँ, प्रथम वेटिंग विद अ स्टोरी. प्रथम काम पे लग गया है वो, और ही इज आल्सो देयर विद अ स्टोरी. प्रथम आपको लेके आएंगे अंदर, नॉट टू वरी. चांदना, चांदना, थैंक यू चांदना. ओके, हु डू वी हैव नेक्स्ट? मेरे को बहुत डर लगते हैं. ओके, हियर वी गो. हाउ यू गाइस डूइंग? हाउ वाज योर वीकेंड सुरेश? ये Good, yeah. गर्मी खत्म कब होगा? कब होगा खत्म ये गर्मी? ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से मॉनसून शुरू होगा. आई थॉट जून आ आज गया से, भाई. इन मई. चेन्नई में तो ऐसे ही लग रहा था एटमॉस्फेयर. मुंबई लॉस्ट टुडे वेरी सैडली, बट या सैडली. वो दुख होता है जब भी मुंबई हारता है. फील वेरी बैड. Suresh, I just want you to know that you holding that microphone does nothing for us or anyone. In fact, it makes it sound like you're letting go of small पार्ट्स. controlled explosions. Ishan Ghosh ji, क्या आप हैं? Ishan. अभी भी नहीं. No, it doesn't do anything. I'm not sure if you know how that thing works. Now Now what? can you hear? Nothing, no. I've been able to hear you this whole time. Now you can hear. Hey, battery backup is really long for these headphones. They go on for like, I've been using them for days on end. But Ishan, क्या कर रहे हो? Already हो गया चौपट हमारा stream. क्या कर रहे हैं? Ishan, we'll try to call you back one of these days. अरे, hey guy, Anonymous. अरे Anonymous ने बोला, wanted to thank you guys for making my CSC prep easy. White noise की तरह यूज किया पॉडकास्ट को. Awaiting final results now. Please send good wishes, especially Suresh sir. Please, बाप का पैसे से super chat lol. सुरेश जी, good wishes All the best. आपकी तरफ से. आशीर्वाद बेटा. Yash says lots of love boys, don't stop these streams. नहीं करेंगे stop, आगे जाएंगे. hop. कौन? Mr. C. All right. Today's one of those like super laid back days. I watched Looper and Jumper. Oh, Looper. And Jumper. Jumper, very Anything, interesting. anybody's jumping, looping, drinking, sleeping, any films like that, I just watch them. Mr. Singh. Kai ko is rahe tum log? White noise. Mr. Singh, waiting for you to come on. Hello, Hello. Hi, Mr. Singh, how are you? I'm fine. आकांक्षा great की मैं talking रीड to you. करता हूँ. हाँ. Hello. Hello जी. I've been watching you for some time and I love your videos. That's you from the other building. I love Welcome, brother. कैसा है? I think ठीक है, चलेगा. लाइट आपके पीछे है इसलिए ऐसा हो रहा है, but no worries. the voice is very low. Hey, they are both different films, Looper and Jumper. Yeah, I know. So let me So, tell you my somebody- story. सुनाइए. This story हिंदी में बोल सकता हूँ? प्लीज सर, Please. कंफर्टेबल हो आप हिंदी में तो हिंदी में बोलिए आप. मैं ये स्टोरी मेरे बचपन की है. ये मैं था कुछ 4th और 3rd स्टैंडर्ड में. ओके. तो मेरी मम्मी की सिस्टर वो रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मैं रहता हूँ हरियाणा में. ऑलराइट. तो मैं हरियाणा से हम उनको मिलने गए थे. तो उधर मास्टर जी ने हमें पिकअप करा जम्मू रेलवे स्टेशन पर. हम रेलवे स्टेशन से हम उनके घर जा रहे थे. घर जैसे ही हम पहुंचे उनके घर में, थोड़ा मैं पेंट कर देता हूँ उनका घर कैसे है. उनके घर में एंट्री पर ही एक शेड है और शेड के सामने एक वॉल है. वॉल और उनके वॉल के साइड में एक एली जाती है जहां पर उन्होंने क्या कहते हैं सामान जैसे कि लैडर वगैरह रखी होती है, वो वहां रखी हुई है. समझ गया. जैसे ही हम एंटर करें, गाड़ी सीधा एंटर करके पार्क हो जाती है.
सीधा जैसे ही हम एंटर करें तो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, उसमें शेडो बनती है पूरी, वो सामने वॉल पर। तो मैंने देखा था उस वॉल पर मेरे फोर्थ और थर्ड स्टैंडर्ड के चाइल्ड था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, ड्राइवर सीट के साइड में। तो सामने वॉल पर एक शेडो जाती हुई मुझे दिखी, चलती हुई, वेरी नॉर्मल। फिर मुझे ध्यान आया कि पीछे तो कोई जा नहीं रहा था, उनके घर के सामने तो कोई जा नहीं रहा था, पूरी खाली पड़ी थी, रात के कुछ 2 बज रहे थे, कोई भी नहीं था। पर वो बंदा सामने चला कैसे, और गाड़ी के सामने शैडो बनी कैसे, क्योंकि सामने कैसे बन जाती है अगर शैडो हो। सो फिर ये बात तक तो ठीक था। फिर मेरा सेकंड फोर्थ माइंड में, फिर हम ऊपर उनका, वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे अपने घर में, उनके रिलेटिव्स भी थे, मतलब जॉइंट फैमिली थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे, मेरे मास्टर और मासी। तो सेकंड उधर, फिर हम रात के 2-3 बजे गए, थके हुए थे, हम सोने लगे। वो एली के पास वाले कमरे के अंदर एक विंडो है, हमें उधर एली दिखती है पूरी। फिर मैं उधर, मुझे सोया, उधर सोकर मुझे बहुत बहुत भूतिया सपने आए, और उधर पास में बाथरूम था। फिर मैं बाथरूम करने गया, फिर मुझे वहां पर बहुत अजीब अजीब वॉइसेस आने लगी, जैसे कैट Interesting. कैट की आने लगी। फिर उधर हाउलिंग हाउलिंग नहीं होनी चाहिए ना, उधर हाउलिंग भी आ रही थी, डॉग्स हाउल कर रहे थे बहुत सारे, उधर कैट्स भी थी ऐसे। उधर एक्सपीरियंस 3-4 ओल्ड चाइल्ड के लिए देखो कैसा एक्सपीरियंस होगा। Hmm. दिस वाज माय स्मॉल स्टोरी। वो Oh. शैडो वाली मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो शैडो बनी कैसे थी, क्योंकि उधर कोई नहीं था, एंड वेरी तो नॉर्मल शैडो ऑफ अ ग्रोन अप मैन। A ये shadow नॉर्मली bunny. कुछ अच्छा, कुछ तो था नहीं वहां पे सामने भी ना, शैडो कोई भी नहीं बनने था, के लिए पेड़, कपड़े, Suresh, वॉल it's पर बनी थी, समथिंग वॉल वॉल पे पर। चलते, बड़े किसी बड़े ने इग्नोर कर दिया होगा, रात के 2-3 बजे से नींद आ रही होती है सबको, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया होगा। फिर मेरा माइंड, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के माइंड, वेरी शार्प। third, fourth standard. हम्म, By this point, बट you बट यू had figured out how light and all was working, but कुछ भी हो सकता है. It could have been anything. But I do बट यू नो understand a कैट्स, scary experience. हम लोग को भी गोवा में, सुरेश, you know ना, अपना बाथरूम बाहर था. तो जब करेक्ट, भी you wanna pee or you wanna poop, बाहर जाना पड़ता था. तो रात को पीछे, then something rustling in this thing. I was worried this snake would bite my ass. Then I have to ask my best friend to suck the poison out. Anyway, thanks for paying वेरी attention. थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, Mr. Singh, रीडिंग। take care. Have a good one. Very थैंक यू। interesting and unnerving story for 3-year-old. सो To you, hey, sir. mic is farting, is it? Mic, Yeah, some so it's mic feedback. beginning to sound like you're slightly being possessed and taken over. Is it? But that's not a problem. आप बार बार उसको पकड़ते रहते ना, जैसे कि हैरी Habibi, अपना. Habibi, देखो, even मेरे now. को हबीबी नहीं बोलने का. देखो, मैं आपसे प्यार मैं करता Habibi हूँ, लेकिन पूछा, हबीबी मैंने हबीबी. हबीबी पूछा। क्या? हबीबी. हबीबी मैंने हबीबी हबीबी क्या पूछा, हबीबी? हाँ, हबीबी हबीबी हबीबी. ओके बीबी. कभी भी। सुनो, आप बार बार उसको हाथ मत लगाओ. देखो, बार बार आप उसको हाथ लगाओगे तो आप अंधा हो जाएंगे. ठीक है, another one under the radar. सुरेश नहीं सुन रहा. I just came to मैं read. सुना, मैं सुना, हाँ. मैं सोच You'll रहा हूँ कि fail क्या in your करूँ। exams. आप एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर आप बार बार उसको टच करोगे. जानवी says, because of Suresh sir, I was tempted to buy a pack of ready to make popcorn. Lots of love to the habooboo gang. Please bring back scam streams. अरे यार क्या बताऊं. मेरा लिस्ट ऑफ वीडियोस टू बी मेड इज वेरी लॉन्ग. विल बहुत कम है लेकिन. सनी श्रीवास्तव, हे ओजे, प्लीज से हाय टू मुद्दू, शी इज वाचिंग. मुद्दू, हे मुद्दू, हाय. हाय हुकू, हाय कसं काय बरं. हाय मुद्दू. Raghav Khanna, Suresh ji, please take me in. Suresh ji, been waiting since first episode of Ghost Stories. Suresh, it sounds like you're crying now. What did you do? How are you doing Shit. these live? Man, Suresh has figured out how to do live effects, voice effects. No software needed, nothing. Hey, वो don't just, say that. what did you I'll be do? very upset. How's that sounding? I'm not able to shit Suresh, to why are hear. you crying? Don't be upset. It's okay. हम लोग बंद करेंगे. Been waiting since first episode of Ghost Stories. That's what you sound like. Oh, shucks. अरे turn. It's okay. It's adding to the stream. There is वैसे भी. So keep this YouTube stream off. Maybe it's your bandwidth. I don't know. Or just take the mic out, put it back inside. Restart. Yash, thank you so much for your message. Yash.
All right, let's keep going. सबको चांस मिलेगा, सबको. All right, let's just quickly check on Pratham. Snapchat filter voice. Suresh is sounding like he's crying. Suresh, great R2D2 impression. Says Jaydeep. Pratham. Hello Hey Suresh. guys, Hi, अभी कैसा है? हाय प्रथम, हाउ आर यू? hello. ऑस्ट्रेलिया में उसका नाइट ड्यूटी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से फोन किया. Wait, I know what's going on. Suresh, are you using a laptop? Of course Yeah. you're using a laptop. You don't have a desktop. You're psychopath. Do one thing. Go to power settings and set it to high performance. You have it on power mode or some other mode. Technical Hoezaay. Come on. Only crazy people speak of themselves in third person. We'll wait. Pratham, थोड़ा एक सेकंड. सब कैसा चल रहा है उधर प्रथम? गर्मी है उधर, perfect. गर्मी? Summer उधर तो starting नहीं now. रहेगा. अच्छा, Yes. ठीक है. सुनाइए. कस्टमर तो नहीं आया ना अभी? No. अगर आ गया तो आप बीच में, डोंट वरी, आप कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर फर्स्ट, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू द स्टोरी, सो गो फॉर इट. Sure. Today today morning I had my shift in Domino's, so I was asking my manager ki I need a ghost story today. I'm gonna be live today. I need a ghost story. So she was like, okay, I'll tell you one. So I thought she'll say तू apparently, साला इधर काम करने आया कि ghost stories देखने. But wait a sec, before you continue, are you say you're running two jobs right now? One is here where you are. Yes. Yeah, I got And also Domino's in the Domino's? morning, and Wow, yes. bro, respect. Amazing. Just Okay, doing it. fine. I don't want to dwell on that too much. Go for it. Okay, so the story goes, this is her uncle's story. Hmm. So way back, her uncle was like a tour guide, and he used to take the tour was along the street of Stuart Highway. And just a backstory, Stuart Highway is the longest highway in Australia. Like it stretches up to like 2,700 kilometers or something. It is the most isolated highway, I guess, in the world. Okay. It goes along it goes along Northern Territory to west to South Australia. So I'll give the backstory. Holy crap, And you're right. It's 2,720 kilometers. yes, like I was like listening to her, and we were like making dough. I was just like focused into her, like listening to her and all. So 10, she 10. told me like, yeah, and so okay, her uncle was taking them on a tour, and the Stuart Highway, it is so isolated that you won't find a fuel station for like 200 kilometers or 300 kilometers or something. It is that isolated, and people over here, because it is that isolated, people like generally if they meet someone, if they see someone, they stop and ask like, are you alright, do you need anything? You need any help? Yeah, everything's so it was a normal day. They were here. Her uncle was on a like he was the driver of the tour bus, and he was taking he was taking some people on the tour, and he was driving, and he like at a distance he was seeing like two people, like just two objects coming closer. And when he like when he eventually when they got closer, he saw a tall figure, like a tall man, like a tall and lean man with, and he had a dog with him. I'm so sorry. No worries, bro. Suresh, meanwhile, I'll Yes, just update. can you hear me? Yeah, we can hear you. Is my voice better, beta? ये विशाल ने कुछ कह रहे हैं, विशाल You're कुछ कहते sounding very nice. Continue. Yes. Huh. So like as his uncle, her uncle was like, he stopped the bus to ask him, are you all right, like do you need anything? And the man was apparently walking on the road,
at like 50 degrees in the heat with his Damn. dog all alone. So like he didn't open the door. Like his uncle didn't her uncle didn't open the door, and he was just asking from the window, "Are you all right? Is everything like? Do you need anything? Just get in the bus, cause there's like 50 degrees, and if you know, guys know, Australian ozone layer is like very thin, and people just like die of the heat stroke. Just 2 seconds." Meanwhile, Suresh is opening different word pads. You can scroll $11. back for visuals of that. You can see the white light up his face. Technical Suresh. He just stares into word pads sometimes like that. This is a fuel station, so everything is expensive. Okay. Enjoy. Thank you. क्या सुनने को मिल रहा है? They're complaining that it's too expensive. Okay. जाने दो उनको So पहले, yeah. हाँ. Oh, you don't say anything. Don't say anything. They left. Yeah, they left. Yeah, Yeah. ठीक है, ठीक है. Yes. Suresh. So Hmm. so yeah. So her uncle was asking him, "Are you already doing anything?" He did not open the doors because he felt something was suspicious. Like they were middle of the Stuart Highway, and this guy was just walking alone with his dog, and so he did not open the doors. The people at the back, they were like, "What the hell are you doing? Like, just go down and get him in." But he insisted that I'm not going to go outside and get him. So he just drove past him and he just went to the nearest town. Hmm. So they took a break and they reached the destination and everything. So that later on that day, when the uncle was sitting with his guys and having a drink, so one of his friend was a cop, and he told this story to that guy, and that guy was like, you while you were on the journey, in that small town, apparently there was a mass murder going on. Like people had their legs cut out till their knee, and they were just hanging there, and they were and she told me that whoever killed them targeted them with having a dog. So the owner and the dog were killed, and like the legs were sliced in half. Like the legs were cut till the knee, and they were just left hanging till they drain out the blood, and they eventually died. And the dog was cut from the throat, and just left there. This was going on in the town. This went in the town, and then the driver told the cop guy, was like, I just had the crazy incident today. He was just telling all the description about that guy on the highway to this police guy. So this police guy informed all of his mates कि ऐसे ऐसे सीन हो रहा है वो हाईवे पे. So next day, like all they were like mass searching for this guy, all to like choppers on the air finding this guy. So eventually they see a thing lying on the ground, and when they went closer to it, apparently the guy who was walking on the street, his legs were cut, and his legs were on one part of the road, and his other upper body was on the other part of the road, and the dog was dead as well. And the creepy part was the kill, like all the people were killed yesterday, but this guy who was dead was killed like after the postmortem. They found out that this guy was dead 2 days ago. The guy on the highway. Oh, so who Yes. did those people see in the car? Oh my god, oh my god. सांस लेने दे भाई, सांस लेने दे. हाँ. check. अरे बीड़ो एकदम कड़क आयला आवाज. Thank you बेटो, thank you. मस्त. एक आपके साथ आते हैं वापस. प्रथम, थैंक यू लेकिन सो मच. प्रथम क्या कहानी है भाई ये आपका? your friend told this to you? Yes, and this is an Aussie story. I know Aussie, but Got which it. place in Australia? In the middle. On the Stuart Highway.
Stuart Highway. स्टुअर्ट हाईवे within their मतलब borders. ईस्ट या वेस्ट है? I didn't ask for that. We were just working. नहीं, which it's near Perth, Sydney, I Adelaide, guess Darwin. I guess Darwin. Darwin. Near Okay, Darwin. okay. Yes. नहीं, I'm just making sure कि अभी ऑस्ट्रेलिया आना हुआ तो वहां पे नहीं जाऊं. सुरेश तो ऐसा बोलो जैसे तेरा मैप में सेव्ड है डार्विन, उधर गूगल मैप्स पे जाएगा उधर, ठीक ये है तेरे सर? डार्विन के बारे में पता नहीं है, प्लीज मेरे को डार्विन के बारे तेरे में मालूम है, ठीक समझा है या? ठीक, प्लीज आप प्लीज कृपया. Anyway, Yeah. Pratham, take care. Have a good one, buddy. All right. Enjoy, guys. All right. Such a hardworking dude, man. I Seriously. swear, Wow, I unbelievable. swear. So this is another bless case him, man. of another case. ये story, Suresh. Another case of people seeing the person who supposedly already died, seeing them a day after their death or whatever. Yeah, but then that doesn't Like a didn't explain warning. that didn't explain the massacre. Yeah. समझा? Basically yeah. जो bodies were found उसके पहले इसका death already हो चुका था, तो he is There is not no- no longer suspect. So you're forgetting what stream you're on. There's no explanation really. नहीं, explanation For has to be anything. that this is a murder case. इसके लिए हमें बुलाना पड़ेगा दया को. कुछ तो गड़बड़ है. तो सर, a while ago you were looking at word pads and notepads and open. क्या lighting था सर? What did you do to fix your microphone? हाँ, मैंने एक्चुअली आई जस्ट रीस्टार्टेड द होल थिंग. तो जैक जो तूने दिया था लैपटॉप में डालने के लिए उसको निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा उसको क्लीन किया और फिर बाद में जो मैंने Your इसका camera's glitching now. No, it's fine. It's fine. Everything's fine. That's not a jack. That's the USB port you were talking about. ठीक है, यूएसबी ठीक. पोर्ट, सॉरी द यूएसबी पोर्ट. ठीक है आपको, एक्सक्यूज मी वो तो फ्रेंच. पता ही रहेगा. राघव Oh my खन्ना 110 रुपया देकर बोले, सुरेश Oh जी my प्लीज God. टेक मी. As he said that, माय Zoom rarely account people has say my that to marriage Suresh. picture with my wife. राघव खन्ना प्लीज help him out. Yeah, अच्छा आ गया. I clicked the button and then he read his super chat. But Raghav, thank you for your message. Hi, it's me. We pretend like the characters are real people. Raghav Khanna, Bagal Mein Ganna, Suresh ji, please take me in. Been waiting since first episode of Ghost Raghav. Stories. राघव कैमरा ऑन कीजिए, आ जाइए सामने. My Zoom account has my marriage pic with my wife. Hey, हाय सुरेश जी, नमस्ते हाय. सर, नमस्ते एकदम हो गए. it looks like a very respectful विराट कोहली. Mera, what is that supposed to mean? मतलब विराट कोहली is actually peaceful, happy, you know, नाराज नहीं. cheerful Sir. विराट कोहली. Same pinch, nya. ओ नहीं, चेयर. आपको देख के लिया होजे. अरे इट्स अ डिफरेंट वर्जन, वो लोगो नहीं है तेरे इसमें, निकाल दिया, देख के पेंट कर दिया. थोड़ा सा ये हाई एंड वाला. ओ हाय एंड ओह. गड्डी है. ऑलराइट. हाँ. तो राघव किधर से? मैं बैंगलोर से हूँ वैसे. वेलकम राघव. वर्किंग इन बैंगलोर Alright. एंड ओरिजिनली फ्रॉम कानपुर, यूपी. ऑलराइट, अरे फैंटास्टिक. कानपुर से आप, क्या बात है. विच स्कूल डिड यू स्टडी इन कानपुर? केवीआईटी. केवीआई. मुझे मेथोडिस्ट पता है, जयपुर या पता है वहां पे. वेरी नोन स्कूल्स. या Yeah, without wasting any further time, I'll like Yeah, to go. Suresh, correct. Thank Thank you, you Raghav. for pointing out that Suresh was wasting time, Raghav. Take it easy. तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके कुछ ना कुछ घोस्ट स्टोरीज होते रहते हैं उनके साथ. तो what I do is make a note of it and I try to tell in my groups when we go out on office trips, camping trips and all that. Got it. So I'm very big fan of ghost stories. I write ghost stories. I have my own blog, which I have segregated some few ghost stories over there. I'll post the link in the description later. क्या बात है, data oriented, sir, please. Yes, very good. So मैं एक ghost story बताना चाहता हूँ. ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था. बहुत रिस्पेक्टेबल फ्रेंड है, उनका नाम अहमद फराज है. तो he also narrates very good ghost stories. तो ये बात है कानपुर की. But sir, also मतलब इधर तो हम लोग तो नहीं अच्छे से नहीं नरेट करते इधर, तो also नहीं बोलने को. I'm just kidding. हाँ, continue sir, sorry. All the respect. You are a very good narrator. तो कानपुर के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, बिठूर जिसको बोलते हैं. तो ये वहाँ की कहानी है. अर्ली 2000s, 1990s, 1999 2001 की कहानी है. तो उस समय क्या था कि गवर्नमेंट उस लैंड को, उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ बहुत सारे प्लॉट्स दे रहे थे फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स खेती करें वहाँ पे जाके. और कोई अगर वहाँ पे लैंड खरीदना चाहता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, ताकि लेटर रेंट आउट कर सकें एज अ हॉलीडे होम एंड ऑल दैट. तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे, मेरे फ्रेंड के पापा ने, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे वहाँ के, इन्फ्लुएंस वाले. तो उन्होंने बहुत बड़ा लैंड लिया वहाँ पे. समवेयर अराउंड 4-5 एकर्स का लैंड था वो.
और उसके लैंड से जस्ट लगा हुआ एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल के थोड़ा सा 4 किलोमीटर आगे जाके एक गांव था। तो मतलब वहां पे पहुंचने के लिए आपको 20 किलोमीटर सिटी क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंचोगे। और फिर उसके आगे जंगल है, एंड द नियरेस्ट सिविलाइजेशन इज अ गांव 4 किलोमीटर, क्योंकि सिटी से बहुत दूर हो गया। तो उन्होंने जब लैंड लिया, वहां पे मुस्लिम लोग थे, तो कलमा वलमा पढ़ के उन्होंने एक कमरा बांध दिया वहां पे, कि यहाँ पे हम लोग आके, और कभी भी खेती बाड़ी करना हुआ, किसी को यहाँ पे आके ठहरना हुआ, तो हम आराम से आके यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन, और फिर पिकनिक करके चले जाएंगे। तो जब कमरा पूरा बन गया, बन के तैयार हो गया, तो अंकल ने कहा कि दोनों बच्चों को लेके और मैं चलूंगा वहां पे, मैं वहां जाऊंगा। वाइफ को उन्होंने घर पे ही छोड़ दिया कि हम लोग तीनों लोग जाएंगे, इंजॉय करके 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो घर पे सबने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दोनों लड़कों को लेके अंकल वहां से रवाना हुए। खाने वाने का सारा सामान उन्होंने भर लिया, क्योंकि सिटी बहुत दूर था वहां से, 20 किलोमीटर, तो कुछ भी खाने का सामान अगर रखना हो तो पॉसिबल नहीं है वापस आना। तो उन्होंने खाने का सामान अपना सब रखा, रहने खाने का बिस्तर बिस्तर सब बांध दिया। जीप में भर के हम लोग वहां से रवाना हो गए। समवेयर अराउंड 3 घंटे हम लोग को लगे वहां पहुंचने में, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। तो रास्ता खराब के चक्कर में जीप ही बहुत गड्ढे वड्ढे होते हुए वहां पे पहुंचे जाके। वापस जब वहां पहुंचे तो आराम से उन्होंने खाना वाना खाया सबने। और खाना खाने के बाद क्या हुआ कि अंकल को किसी दोस्त के मिलने की खबर पहुंची कि एक दोस्त आने वाला है उनके पास। उनका बहुत पुराना दोस्त है, और वो भी आके रहेगा। तो अंकल थोड़े डर गए कि अरे यार, दोस्त आएगा और खाने का सामान हमारे पास बहुत कम है, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग 3 लोगों के हिसाब से खाना लेके आए हैं, और 4 लोग आ जाएंगे तो एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके से। तो अंकल के दोस्त आए, उन्होंने भी खाना वाना खाया। और जितना खाना हम लोग 3 लोगों के लिए 2 दिन के लिए लेके आए थे, वो एक दिन में ही खत्म हो गया सारा खाना। तो अंकल ने नेक्स्ट डे सुबह बोला कि मैं दोस्त के साथ जाके और शहर से कुछ लेके आता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे मुझे। और बच्चे लोग, 2 बच्चे तो थे, समवेयर अराउंड 13 ईयर्स एंड 15 ईयर्स अराउंड, दोनों लोगों को घर पे छोड़ा और बोला कि तुम लोग यहीं पे रहो। और एक नौकर, एक वहाँ पे केयर टेकर था जो प्रॉपर्टी केयर टेकिंग करता था, उसको बोला कि तुम लोग उनका ध्यान रखना, और इनको कहीं जाने मत देना, बच्चों को अकेला कहीं। अंधेरा होते ही मेक श्योर कि दे आर इन द प्रॉपर्टी एंड नॉट गोइंग आउटसाइड। तो केयर टेकर ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वहां से, अंकल और उनके दोस्त, जीप लेके चले गए सिटी साइड, खाना वाना लेने और इंतजाम करने। उतनी देर में 2-3 घंटे बाद कोई वहाँ गांव से आया, और उसने केयर टेकर को बोला कि तुम्हारे पापा की तबीयत नहीं ठीक है, तो तुम्हें चलना पड़ेगा देखने के लिए उनको। तो केयर टेकर ने आके बच्चों को बताया कि मेरे को जाना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए, और फिर मैं जल्दी से आ जाऊंगा। तो वो साइकिल लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कच्चे रास्ते में, जंगल के रास्ते, वो अपने गांव चला गया। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 3 एकड़ की, वहां सिर्फ 2 बच्चे बचे, और कोई भी नहीं पूरी प्रॉपर्टी में। शाम हो गई, कोई नहीं आया, ना अंकल आए, उनका दोस्त भी नहीं आया साथ में, गांव से केयर टेकर भी नहीं आया। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, ऐसे करके रात के 9 बज गए। बच्चे बेचारे अकेले क्या करेंगे, परेशान हो गए। तो उन्होंने कमरे को बंद कर लिया, अंदर से प्रॉपर्टी को पूरा लॉक कर लिया। कमरे के अंदर कैंडल्स जला ली कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। 1 घंटे बाद उनको एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी कि जंगल के रास्ते से कोई जीप आ रही है। तो उनको एक बार को लगा कि शायद उनके पिताजी होंगे, दोस्त के साथ आ गए होंगे खाना लेके। तो वो लोग थोड़ा सा बाहर निकले गेट खोल के। उन्होंने देखा कि जंगल के रास्ते से अंदर से कोई आ रहा है, जबकि वहां पे जीप जाने का रास्ता नहीं, वहां सिर्फ साइकिल जा सकती है या कोई आदमी पैदल जा सकता है। तो उनको थोड़ा सा शक शक हुआ। उन्होंने कहा था रिस्क क्यों ले भाई, अंदर जाते हैं, अंदर से लॉक कर लेते हैं, अगर पापा होंगे तो आके गाड़ी लगा देंगे और फिर बुलाएंगे हम लोगों को। जीप आती गई, पास आती गई, जीप के आने के बाद बहुत तेज हो गई। घर के सामने आके जीप रुकी, और गेट खुला उसका, इंजन अभी भी ऑन है जीप का। कोई निकला उससे, काफी बड़े कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी आदमी चल के अंदर आ रहा है। और बारिश वारिश हुई थी, तो हल्का बहुत मिट्टी गीली थी। तो जैसे कोई गीली मिट्टी पे चलता है बड़े पाँव से, वैसे ही कोई आता हुआ अंदर उनको महसूस हुआ। वो लोग थोड़ा डर गए कि ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे पिताजी हैं। उन जो आदमी अंदर आ रहा था, उसकी आवाज में एक ग्राउलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत बेसब्रा इंसान है कोई। वो आके गेट के सामने जस्ट खड़ा हो गया। इन्होंने आवाज लगाई हिम्मत से, कौन है वहां पे। कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक ग्राउलिंग आ रही थी, बहुत भारी आवाज, ऐसे करके। उसने चलना शुरू किया एक साइड से,
दरवाजे के राइट साइड से वो चलना शुरू किया। उसने पूरे कमरे का जायजा लिया और वापस आके गेट पे खड़ा हो गया। अब उसकी आवाज में और तेज ग्राउलिंग थी। फिर उसके कदम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलना चालू हुए। फिर उसने दूसरे साइड से कमरे का जायजा लिया, फिर आके वहीं खड़ा हो गया। अब उसको बेचैनी हो रही थी, जैसे वो अंदर आना चाहता हो, अंदर आ ना पा रहा हो। बहुत तेजी से उसने चक्कर लगाए कमरे के, एज इफ स्प्रिंटिंग करता है ना कोई, ब्रिस्क वॉकिंग, वैसे करके उसने एक तरफ से चक्कर लगाए। लेफ्ट से लगाता, फिर राइट से लगाता। तो बच्चे काफी डर गए। उन्होंने देखा कि दीवार पे एक बंदूक लटकी हुई है, पापा की बहुत पुरानी दुनाली बंदूक है। उन्होंने दुनाली बंदूक उतार उतार ली वहां से, और खिड़की के बाहर से निकाल के बोला कि मेरे हाथ में बंदूक है, जो भी बाहर है बता दो कौन है, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बच्चा बोला। तो जो ग्राउलिंग आवाज में था वो इंसान बोला, ऐसी जगह खड़े हो जहां से अंदर आना बहुत मुश्किल है, बाहर आओ फिर बताता हूँ कौन है। बच्चे बहुत डर गए, उनके हाथ से बंदूक छूट गई और वो एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे एक कोने में जाके। अब वो एक चक्कर लगा ही रहा था इंसान, अंदर नहीं आ पा रहा था। उसने दरवाजे को भी हिलाने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। बच्चे एक कोने में सुबक सुबक के रोए, जोर जोर से रोए, और जितनी भी कमरे की मोमबत्तियां थी सब बुझ गई। कुछ हवा चली, क्या हुआ, उस साए का कुछ प्रकोप था, सारी मोमबत्तियां बुझ गई। रोते रोते बच्चे बेहोश हो गए और उनको कुछ भी होश नहीं रहा कि क्या हुआ। एक दो घंटे बाद उनको होश आया। दरवाजे पे कोई पीट रहा है। एक का नाम था शम्स, दूसरे का नाम था फराज। शम्स, फराज, दरवाजा खोलो, दोनों बच्चों का नाम था। पापा आ गए थे उनके। बच्चों की अचानक आंख खुली, बच्चे फौरन भागे। दरवाजा खोला, देखा पापा और उनके दोस्त खड़े हुए हैं। वो उनको गले लगा के जो रोए हैं, मतलब जैसे उन्होंने बहुत सालों बाद पापा से मिले हों, और वो बहुत रोए। पूरा सब उन्होंने बयान किया कि क्या हुआ उनके साथ। और जो अंकल को बताया उन्होंने कि ऐसे करके कोई आदमी आया था वहां से, और बहुत जोर से गुर्रा रहा था, हम लोग को डराने की कोशिश करी, अंदर नहीं आ पा रहा था। तो जो पापा का दोस्त था, उन्होंने बताया, बेटा ये जो कमरा है, ये तुम्हारे दादाजी ने दुआओं से बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाया। तो उनके दादाजी बहुत बड़े मौलवी थे कहीं के, जिन्होंने कमरा बांधा था उस समय पूजा करके। तो उसकी वजह से वो आत्मा अंदर नहीं आ पाई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कानपुर के एक गांव की। क्या नरेशन था सर, तालियां बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया आपने नरेशन था। हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग किया, उर्दू वाक्यों का बहुत अच्छा प्रयोग किया, आप मुंबई बहुत आ मजा है सकते सुनने हैं। में। प्लीज, बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइसली नरेटेड। तो आई नो आगे मैं सॉरी। कभी और फिर से आऊंगा, सुनाऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, टेक केयर राघव, हैव अ गुड वन। यू टू सर, थैंक यू। और रियली जाते नाइस। जाते प्लीज वो क्या साउंड था, ग्राउलिंग का साउंड एक बार सुनाइए आप। हाँ, हाँ। मेरा हाँ, फोन ये सेम साउंड करता है वाइब्रेशन मोड कुछ पे। देर पहले मेरा माइक पे ऐसे ही साउंड कर रहा था। ऑलराइट, टेक केयर राघव, हैव अ गुड वन। थैंक यू सर, रियली बाय। नाइसली नरेट, हैप्पी वीकेंड। ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सुरेश। क्या नरेशन था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वाज लाइक वेरी नाइस। डैड ही था। इट वाज द फादर इवन आई ओनली वाज गोइंग आउटसाइड। टू, अरे आई नो यू हाउ, वर थिंकिंग दैट, दैट्स व्हाई बीच में मैं तेरे को इशारा कर रहा था। I know I was feeling very bad. That firstly, these guys are left two kids alone. The caretaker first should be hammered, with a belt, or the caretaker knew कि ये इस He टाइम पे should आता है be और वो निकल hammered गया. with a belt. Yeah, obviously leaving the children alone. You know, how sad is that? Stupid. Anyway. Hey, no, but listen, the thing is that caretaker left the house at the exact same time. Perhaps he knew कि this entity comes in. Did Either you it was realize the that? caretaker or it was the father, I feel like. No, caretaker को मालूम रहेगा ऐसा कुछ हो रहा, बाप रे. Mm. I like the way he said कि जहाँ पे तू है अंदर, वल्डरमंट की Yeah, आवाज में, क्या yeah. वही करती, Suddenly जहाँ पे थोड़ा तू है अंदर वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है हैरी, तू तू बाहर आ. बाहर आ, बाहर निकल, But he said it माँ a का bit दूध like पिया तो बाहर निकल. Imagine the narration. ghost giving filmy dialogue. Sorry sir, I Hey, interrupted you. Yes, yes. no, नहीं it's मैं okay. देखा सर. You are going the same route. I just wanna, before I forget this, earlier that guy was saying ना वो रास्ते से जा रहा था और वहां से एक लाइट आ रहा था. It reminded me of your Right? segment that you used to do, Sanjeev Kumar's driving tips. Today I remembered one more thing that we used to do, which Yes. remember we used to play that, Content. हमारा roving reporter
लंबा लच्चू अब इस वक्त इसके हाँ बंगलो के बाहर है। हेलो हेलो सर, इधर हम लोग सब रुके हैं और देखते हैं क्या होगा। एंड मोमेंट दैट somebody supposedly came and I used to start, सर सर प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज इस ए तरफ देखो, साइन मेरा साइन करो मेरा छाती छाती मेरा पे। एंड आई यूज्ड टू से ऐसे आप कैसे रिपोर्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एंड द क्रेजी पार्ट इज रिपोर्टर्स आर लाइक एक्चुअली लाइक दैट टुडे। I know, that's what I was hearing some of them today and I laughed so much. Oh my we god. we knew they would become like this so many years back. Oh shit, crazy. Wow. Crazy. Anyway, our first test bowl has been very successful. I asked how was Raghav's story? मजा आ गया 68%. चुप तू Correct. काम कर अपना 31%। 31% को मैं देख लूंगा बाद में तुम लोग। हमारे ही लोग इधर अब मेरे साथ ठीक है। Oh, this looks interesting. You know, I'm up late now, so usually I don't like to watch horror films. This is so weird. Between 12 Oh, even and I don't 3, like. I don't watch a horror film. Even 3 to 4 मेरे को नहीं देखने। 4 बजे के बाद technically feels like morning to me, so मैं I'll watch देखता ही नहीं हूँ। then I'll watch a horror film. Anyway, Pune Flat Mystery, welcome to the stream. Hi. Surdo. Can you hear me? We can hear you. Hi. Hi. So, हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, married to a Mallu, right now living in Bangalore. Okay. But ये तब की बात है जब मैं पुणे में रहती थी. I'll dive right into the story. No. So, आराम से. आराम We से। are full 43 minutes for this story. I'm just kidding. अच्छा, क्या रेटिंग 40 देंगे? मिनट ले लेती हूँ फिर पूरा। ले क्या लो। रेटिंग देंगे आप अपना स्टोरी को? यार रेटिंग तो ऑनेस्टली बताऊंगी, हमारा जो भूत था वो बहुत पागल था। बहुत इंटरेस्टिंग, फेयर इनफ। बहुत वियर्ड चीजें होती थी, बट हाँ, वी आर लाइक एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, बट देन वी वर लाइक 95% श्योर कि समथिंग क्रेजी कुछ वाज अजीब हो रहा है। हैपनिंग। ठीक है, सुनाइए आप, हाँ, सुनिए, स्टेज इज योर्स। तो हम लोग पुणे में हम लोग घर ढूंढ रहे थे, 3 ऑफ अस। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट थ्रू सम ऐप इधर उधर से हमने एक घर ढूंढा, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पुणे के। एंड एज द टिपिकल स्टैंडर्ड स्टोरी गोज, सस्ते में मिला, हमने उठा लिया। 3 BHK था वो, एक बड़ा सा हॉल के साइड में किचन, एंड देन एट द एंड 3 रूम्स थे। वहां पे जाते साथ, जैसे आई थिंक 3-4 साल से वो घर बंद था, क्योंकि जितना वो डस्ट और उससे समझ आ रहा था कि बहुत मतलब बंद था, कभी कोई रहा नहीं है प्रॉब्लली वहां पे, या ऐसी कुछ तो भी। थर्ड फ्लोर पे था उस टाइम पे। होता क्या था कि जैसे ही हम लोग गए, हमें वाइब्स तो ऑफ थी, स्टार्टिंग से ही वाइब्स ऑफ थी। फर्निश्ड नहीं था घर, तो ऑलरेडी खाली खाली लगता था, बहुत वियर्ड सा फीलिंग स्टार्टिंग से ही था। एंड देन ये चीजें जो है हमारे किचन की, स्पेशली किचन की चीजें जो है वो गायब होने लग गई इमीडिएटली। जाते साथ रहते साथ खाली खाली होने लग गई हमारे किचन की चीजें। अब इनिशियली हमको लगा हमारी जो सुबह सुबह आंटी आती थी साफ सफाई करने के लिए, पहला शक यूजुअली ऐसे कि हम एक दूसरे को पूछे, क्योंकि हम तीनों की चीजें गायब हो रही थी। कुछ हम लोग ने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है। देन आंटी को हमने थोड़ा नोटिस करना शुरू किया। तब आंटी आती थी खाली हाथ, झाड़ू पोछा मार के चली जाती थी। अब खाली हाथ जा रही है, तो अगर आटा है, 1 किलो आटा है, 1 किलो का आधा किलो गायब हो रहा है। ऐसे कैसे, जो पूरा इसमें रखा हुआ है, एक डब्बे में रखा हुआ है, आधा किलो गायब हो रहा है। वी हैव नो क्लू कि कैसे जा रहा है। तो आंटी का तो निकल जाता कि आंटी नहीं कर रही है। वी हैड अ कुक ऑल्सो, कुक भी नहीं करते थे, क्योंकि फिर हमने क्या करना शुरू किया था, हम तीनों साथ में ऑफिस जाते थे। कुक आके खाना बना के चले जाते थे, हम लोग टिफिन वगैरह पैक करके लॉक करने के पहले वी स्टार्टेड मार्किंग आवर बॉक्सेस कि अभी इतना खत्म हुआ है, तेल बोलो या आटा बोलो या फ्रूट्स बोलो, जो कुछ भी है हम लोग मार्क करना शुरू कर दिया था हमने। एंड देन ऑल 3 ऑफ अस यूज्ड टू गो टू ऑफिस, कम बैक फ्रॉम ऑफिस, एंड वी वुड सी कि आधा डब्बा खत्म है, हाँ, मूव्ड है, खत्म है, ये है वो है। इट वाज वेरी वियर्ड, बहुत वियर्ड चीजें स्टार्टेड। एंड देन वी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कमिंग टू अ फ्लैट, जो हर बार जो भी आता है हमारे घर पे यही बोलता था कि यार बहुत वियर्ड फीलिंग है, बहुत वियर्ड सा स्मेल आ रहा है। एंड देन दे यूज्ड टू टेक अस टुवर्ड्स द किचन। किचन बंद है, कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने क्लीनिंग करवाया, ये करवाया, कुछ नहीं। सब लोग एक ही चीज की, यार बहुत वियर्ड सा स्मेल आ रहा है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, होगा कुछ। हर बार अभी चीजें वियर्ड ज्यादा होते तो मतलब मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस तो ये हुआ कि हमारी चीजें जैसे गायब हो रही थी। मोस्टली खाना गायब होता था, ऐसे पैसे वैसे तो कभी गायब नहीं हुए।
तो मुझे आदत थी कि मैं रात को मतलब रोज सुबह ऑफिस में एक कोई फ्रूट लेके जाती थी, कोई भी फ्रूट। तो रात को मैं ऑफिस से वापस आ रही थी एंड आई गॉट दिस 8 डजन मौसम्बी का पैकेट इन अ ब्लैक कलर का बैग। आई केम टू माई रूम। मैंने रूम अंदर से लॉक किया बिकॉज दैट इज हाउ वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन अ फ्लैट। रूम अंदर से बंद किया, कबर्ड में डाले मौसम्बी। इमेजिन हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे मौसम्बी का बैग, हम लोग कबर्ड में डाला, कबर्ड लॉक किया, की मैंने पिलो के नीचे रखी। अब हो गया, सुबह उठी, सुबह कबर्ड खोला, मौसम्बी गायब, सिर्फ ब्लैक बैग है। बहुत I'm वियर्ड, so बहुत invested in this story right now. I need to know क्या हो रहा है। फिर मैडम फिर तो ये हमारे ऐसे मतलब ये बहुत वियर्ड हो रहा था। एंड देन वी वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली कि ठीक है, होगा कुछ। बट देन लॉक्ड रूम है, लॉक्ड कबर्ड है, मैं अकेली हूँ, गायब कैसा? एंड देन खाली वाला वो ब्लैक बैग, खाली प्लास्टिक का ब्लैक बैग है अंदर। मैंने खरीदा कल रात को, नहीं है। देन अनदर weird थिंग दैट हैपेंड वाज सैटरडे आफ्टरनून था, मैं मेरे रूम में सोई, पूरा पेल के सोई हुई थी। मेरी दूसरी जो फ्लैटमेट पूरी ऑफ मतलब गई हुई थी। एंड देन द थर्ड फ्लैटमेट, हमारे तीनों रूम्स एक ही जगह पे थे। एंड देन द थर्ड फ्लैटमेट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी फोन पे। एंड आई थिंक शी वाज हैविंग अ फाइट विद द बॉयफ्रेंड एंड एट द सेम टाइम शी वाज, इट्स वेरी फनी ओके, बट शी वाज ईटिंग अ बनाना। वो ना खाते खाते मतलब बहुत गंदा झगड़ा हो रहा था शायद उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसने अपने रूम में एक फोन पटका एंड देन शी वेंट टू द किचन एंड बनाना का जो पील है वो किचन में ऐसा फेंका और अपने रूम में आई। एंड इट इज लाइक बेयरली ऐसे एक फीट का डिस्टेंस होगा आई गेस। एंड देन बाद में एकदम से सडनली वो हमारे दरवाजे पे बैंग कर रही है, रोते रोते, लाइक पूरा रोते रोते कि साक्षी साक्षी, मेरा नाम साक्षी है बाय द वे, Hi, साक्षी साक्षी उठ तूने किया क्या, तूने किया क्या? मैंने कहा क्या किया, हुआ क्या है? एंड आई वाज विजिबली एकदम ऐसे नींद से उठी हुई। तो बोले, तूने क्या किया? फिर उसने दूसरे फ्लैट में उठाया, बोले तूने किया क्या, तो बता तूने। मैंने हुआ गया, तो बोली मैं अभी गई उधर, मैंने मेरा पील फेंका एंड देन आई केम बैक एंड विद इन अ सेकंड आई वेंट बैक टू चेक कि नहीं आई मीन इट्स नॉट द राइट थिंग, आई शुड थ्रो इट इन डस्टबिन। पील गायब इन अ सेकंड, पील गायब। सो ऐसे वियर्ड थिंग्स स्टार्टेड, आई मीन एंड देन द वो एस्केलेट होते गए चीजें टू द पॉइंट एक बार हम तीनों ऑफिस में थे, हमको कॉल आया सोसाइटी वालों से। सोसाइटी वालों ने तुरंत हमको बुलाया, पता चला कि नन ऑफ द टैप्स वर ओपन बाय द वे। एंड मतलब हमारे घर में इतना इतना लेवल का, मतलब फ्लोर से इतना इतना पूरा पानी से भरा हुआ है। एंड पानी नीचे टपक रहा था, नीचे के फ्लोर पे। तो नीचे वालों ने कंप्लेन किया वगैरह एंड देन थिंग्स स्टार्टेड एस्केलेटिंग। लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया 100 टाइम्स, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही किचन को पास कर रहे, किचन का लाइट ऑन हो रहा है, पास हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो ऐसे बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें होती थी। एक टाइम आया, हम लोग फिर भी 2 साल रहे वहां पे, एक टाइम आया जब चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी एंड वी स्टार्टेड गेटिंग रियली स्कैर्ड। एंड कोइंसिडेंटली हम तीनों का फिर ऐसा मौका आया दैट वी जस्ट वेकेटेड द फ्लैट। बट हमारा बहुत भुक्कड़ भूत था। This is the Bukar- wildest but story I've heard in a and long the time. best part is the three of y'all didn't express any fear at all. 2 साल मतलब I would have run away in the first day itself. नहीं तो अभी हम लोग को ऐसे लग रहा था कि हाँ हम पागल होंगे या फिर यू डोंट केयर। इनिशियली तुम्हारा फर्स्ट थॉट डजंट गो कि हाँ भूत होगा, बट चीजें गायब हो रही है। अभी लॉक्ड रूम से चीजें गायब हो रही है एंड नॉट जस्ट गायब, चीजें आती भी थी कहीं से, तो भी किसने लाया नहीं है, फ्रिज में रखा हुआ है एंड वी हैड नो आइडिया I got a तूने लाया weird. तूने लाया नहीं। Did एंड this देन stop? इनिशियली हमको लगा ये बंद हुआ कि नहीं? No, they left the flat, so he there's no. left, he So left. she's not able to give us a solution to what I happened need to speak to or whoever's what it living was. in that flat now. Who is owning the house? I want to speak to them. Firstly, they can't give flats like No, this to I'll people. tell you one thing why we didn't dare to talk to the owner, because the owner at the time was an 84-year-old retired army officer. वो बहुत Oh. स्ट्रिक्ट थे, वो उनको कहाँ जाके बताएंगे कि आपके घर में भूत है क्या? Boy, no, I'm saying maybe we can talk to who's staying there now. Probably. Oh yeah. God, this is like quite freaky. Or else, the cupboard where you kept the Mosambis in, actually it's got a false door. And that's the entry and exit point. Mosambi leke gayab. नहीं And everything is half of, matlab, उस हिसाब the cook was उस हिसाब cooking, से हमारा somebody's रेंट बहुत cooking. कम था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ था. 1 minute, our panelists are all speaking at the same time. Sakshi ji, over to you. Then Mr. Chidambaram will speak. Yes, Sakshi ji.
यार बहुत, मतलब ऐसी आवाज भी आती थी टिक 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 करके। एंड एट वन पॉइंट देयर वाज, ऐसे बहुत चीज है बट आई जस्ट रैप इट अप। ऐसे हम लोग एक एक जगह है, फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम जगह, हमारे घर पे एक कोना है, एंड वहां से टिक 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 करके आवाज। एंड इमेजिन एक खाली जगह, वहां से आवाज आ रही है, हम तीनों घूर रहे हैं उस जगह को कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई Wow. कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तीनों घूर रहे Oh हैं कि आवाज कहाँ shucks. से। I Insane. think I resolved it. I solved it. I'll tell you what. हाँ Nowadays, बोलो these सर. people now they have this. You can attach all the gadgets through your phone. You know that, na? हम्म। So this landlord must be having access to that. But since he's slightly on the old, like he's like me, so he must probably be Well messing around with. handled. So on off करते करते कुछ ऐसा button touch होता रहे, and that's why the lights are going on and off. That could be one reason. But this is a wild story, and all three of you all together went through this madness. And Yeah, also his yeah. driver must have an access to the चाबी of the house. Whenever you all went to office, he used to come और थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के जाता था, thinking you all wouldn't realize कि गया हुआ है. But How it didn't make sense. how यार, long आता ago इतनी was बड़ी this? गाय पे। How It long must have ago 2 did this years back. happen? 2 years This back. happened for 2 years, अच्छा खासा 2 नहीं, years. this 2 years back. How नहीं long नहीं, back? this happened 7 years back, Okay. 6-7 years back. Someone needed to install a CCTV camera or something Yeah. just to. Anyway, Yeah. अभी क्या कर सकते हैं? Sakshi ji, thank you so much for sharing that story with us. I'll also like to tell you, मैंने binge watch किया आपका सारा stories, and most of the stories I'm are so ऐसे ना sorry. कि सस्ता घर मिला, मैं बैंगलोर में ही सस्ता घर मिला, मैंने ले लिया क्योंकि बैंगलोर तो पहले हाँ सो हैपेंड कि मुझे उसी टाइम पे बैंगलोर में घर लेना पड़ा। I ended up सस्ता buying a घर. flat with cheaper rent. बोला ले लेते, पेट लेंगे भूत होगा तो काम नहीं। और एक एक्सपीरियंस है ऑलरेडी. अभी तो कुछ है, अभी तक तो कुछ हुआ Only if it नहीं। is too cheap, then you have to be worried. If it's a good deal, then चलता है. चलता है। Anyway, thank you, Sakshi. Have a good one. Thank you, Bye thank bye. you. Suresh. So Bye. Suresh, we asked Bye. the Harami chat what they thought of Sakshi's story. Was it, or what do you think happened in Sakshi's story? Was it a monkey, a really smart rat, or was Suresh secretly living there? 78%, an overwhelming number of people believe it was you, Suresh, who lived in the house. I also Yeah, think with someone was maybe living in the house secretly. That's a very creepy thought, but it's what other explanation could there be? Up to the point where they locked it inside and then took the key and all. वो कैसे हो सकता है? imagine. So the thing is that the landlord must be saying कि देख आप लोग से डिपॉजिट लिया 2 साल तो इधर रहना ही पड़ेगा आपको, अभी छोड़ नहीं सकते, करेक्ट? एंड देन यू से अरे देयर सम इश्यूज ओवर देयर वी हैव टू लीव, सो इफ यू लीव बट forego the deposit, so if that is a game, Oh, अच्छा. People have done crazier yeah, things wait, for what if that land is a and game? property and all. Oh my God, Suresh. क्या लेवल पे आप लेकर आए हैं? Investigative. ईशान मैंने नहीं देखा आपका सुपर चैट, माफ करना बड़ा, आपका बाकी मैसेजेस मैंने देख लिया, माफ कर देना प्लीज ईशान. ठीक है. अरे he is asking to be taken inside this, he has a story to narrate. Oh, ईशान का you should बेचारे का sleep वाईफाई more. का इशू था, that's why he is saying कि ठीक है. please take me back. सबका होता है वाईफाई का इशू. जैसे मेरा, am I sounding good now? Sounding fantastic. रोका रहा, अच्छा साउंड हो रहा है बेटा, अभी सब ठीक चल रहा है. Bro, solid है, Yeah. solid. Thank you. अरे Then as we got up in the morning, Suresh, right up your alley. What a comment this is. ANPHP15 says they should have added laxatives. oh shucks, brilliant. Yes, that was beautiful idea. I cannot believe you did not come up with that idea yourself, Suresh. That's a travesty. Ishan ji, how are you? Hey, but that time in the actual ghost रहता तो पता चला लूज मोशन हो रहा है भूत को. No, please. Ghostly lose motion. That's Suresh's impersonation of a ghost with loose motion. हिमानी अग्रवाल बोल रहे हैं कि I love debunking theories. हाँ, अपने को भी बहुत मजा आता है. ईशान, don't worry, you are with us. हम लोग अभी आपको लेते. Yes, madam. ईशान. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं. अरे मैंने अभी अपना कैमरा ऑन किया था. हाँ, we saw you. Don't worry. Off ही रखना है तो रख दीजिए off. आप सुनाइए आप स्टोरी. और by the way, सुरेश, ईशान क्या करेक्शन है? हाँ. Oh, नहीं, you remember Ishan your में son's he name is Ishan, na? but he's with the E, na? That's why I didn't react. अच्छा, But oh. Ishan is also the hero of the film that I've acted in called Dil Bil, which will be coming out very soon. Bizarre Thank you. trivia.
Ishan Khanna, his name is. Yeah, Hey, when is that movie come out where you have the Apple logo on your head and all, Suresh? that's the one I'm talking on. Oh, that's the one? Dil Bill. You Dil got Bill. it. It's called Dil Bill. Like Kill Bill. Yes. What fun. I cannot wait. Suresh is playing a villain in Nice. that film where he's obsessed with Apple products. So he has a One second, I'm tattoo just on his putting head. on a light. I don't know why Hell, this. oh, bless एक you. लाइट ऑन करके आता वेट हूँ. का भी प्रॉब्लम है. ओके ईशान, टेक इट अवे सर. वेल लिसनिंग, क्या रेटिंग देंगे अपना स्टोरी को? क्या रेटिंग देगा मैं 5 6 फेल्ड. I ओके, don't know. Yeah. 7 तो देना चाहिए. एनीवे ठीक है, सुनाइए आप. चलो ठीक है, आप दे दो साथ. मैं वैसे दिल्ली से हूँ and I'm staying in Bangalore. Okay. And like I've been so many years in Delhi, but I have never seen like so many hauntings like in Bangalore. So Oh, basically, the thing is, I live in a hostel. I am doing hotel management, IHM, and I stay in a hostel. Okay, okay. I stayed in its official hostel quarters. So it has been like 7 months, 7 8 months staying here, and a lot of things have happened. So I'm just gonna skim through those Yes, quickly. please. I'm not gonna take much of your time. So the first thing that happened, I like it had been 4 months of me living in the hostel, and so this one night, there was a power cutoff in our building. So what we did was like I usually stay alone in my room. So I have two other roommates. Every room has at least three people living in them. So I have two other roommates, and they went to like the adjacent room to hang out with their friends and stuff. Yeah, they were sitting in the balcony, and I was sitting in the corner bed, facing the window. Yeah. Hmm. So I was sitting there, and what happened was that it was a really windy night, and our gate was open, the entrance gate, and our balcony gate was closed. So what was happening was our window was also opening, so wind was coming in, but our doors did not close. So what happened was I was sitting there, and a lot of clothes were hanging inside our room because we don't use our railings. I don't know why, but we don't. So the clothes were just waving in the wind, you know. And what happened was I saw that a towel, was at place. Then the wind blew it, so it basically missed like वो अपनी जगह से हिल गया, है ना, जैसे होता है हवा में, है ना, तो अपनी जगह से हिल गया. So behind that I saw a little girl wearing a yellow frock and curly hairs, just looking at me and smiling. Then the towel came back into its original position, and she was gone. She was not there. So that was the first instance. Hmm. Then on that night only, like I was so freaked out, I just left my room. Oh yes, before leaving my room, the wind was blowing so hard, like all of a sudden it got क्या कहते हैं, रुक it गया. was blowing so hard कि पूरा नहीं दरवाजा बंद हो गया. So the door was closed and I was inside with that thing, whatever I saw. So for a moment there, I was so freaked I could not move a muscle. But then I just ran. But then I just ran and went to the other room with my friends. The same night, what happened was my I was explaining this all to my roommate, and he was ironing his shirt. He was just standing beside me, and I just saw a dark figure run across the room, like just behind him. So I was sure that it's not only happening when I was only in the room, but others were also in the room. This was still okay because before that also
I could hear knocks on my window, like in the middle of the night. Somebody would just knock on the window, and I would get really spooked. But then one night, what happened, and this happened. I'm so glad this did not happen with me. What happened was that my roommate, the adjacent room, one of their room members got up to fill their water bottle. Okay, so when they just went out of the room, the thing is, wait, I'll just show you. I'll have to show you the layout of the room for this. Okay, I'm sorry, if I'm taking too long. I'm just No, No, no. please. little nervous. What is there to be nervous as long as you're not in that place right now? Yeah, That's so it. no, our rooms are like this. We have three almiras side by side. Yeah. So just our adjacent room are the almiras are on the right side in the adjacent room. So what happened was he just went out of the room and he looked back to ask something from his roommate. He just looked back. One of the doors of the almira was open. So what he saw was my roommate was peeking through the almira door and smiling at him. He just looked at him and smiled and went inside the almira. He saw that. Okay, and then he got so freaked, but he did not know how to react. He just filled his water bottle, told his roommate what he saw, and they both came into our room. The roommate that he saw was sleeping on our bed. He was sleeping just beside me. So Oh, yeah, and a similar instance happened in our mess hall. Like one of our one of our friends was like having lunch, and after having lunch, he just washed his hands and was about to like go back to his room. But our like in between, there are some pillars, like thick pillars in the mess mess area. So behind one of the pillars, he saw my my roommate, and this happens in only two rooms. Like me, this the room I stay in, and my adjacent room. This things only happen with us. So he saw my roommate just peeking behind from the pillar and laughing, and then going back into the pillar. And that day, when he asked me, I told him that my friend is not going, like, he has not been inside the hostel since last night because he has gone to his grandmother's home and sorry. he's not here on. So I don't know who you saw, but that was not my friend. So yeah, things like this happen, and like knockings and voices are also like And regularly heard. floating, they seem to be floating also at times, correct? Floating? No, no, not floating yet. Then again, Yet. I have like a very strong fear of darkness, so also sometimes see things. So, Oh, but when I heard my friend's story, then I knew that I was not just seeing things. It was something was actually here. crazy. So yeah, This is the same place that you're in now? yeah. One more Oh, month left. After that, we'll just go out. oh, बाप रे. ठीक So है. you're right there right now. एक दो Yeah. लाइट ऑन रखने का थोड़ा बस डार्कनेस से डरे तो लाइट ऑन रखने को. 0 वॉट का बल्ब आता है ना, वो भी रखो. हाँ सॉरी. और बेस्ट इज हाँ टू हैव नहीं 20 वॉट्स और 40 वॉट्स का बल्ब. ईशान को डर लगता है लेकिन उसको मजा भी आता है हाँ सही देखो बात सही बोला आपने ये बिल्कुल क्या? विच प्लेस पता इज है दिस बाय द वे? वेयर आर यू? Atigupta in Bangalore. ओके. बाप रे. Yeah, Bangalore is very scary. Like, not just my hostel. My friend has a flat. He says that when he sleeps, like somebody just walks, uh, walks and comes sit beside him while he sleeps. Like he can feel the mattress
just pushing down. Is your friend married? No, Because sometimes your he's spouse in does college. that. What are you laughing about, Suresh? That Anyway, was really Ishan, take came it. Have a good one. unexpectedly. Ishan, but also your friends, they don't smoke up and all that stuff, right? I'm just asking for, I'm As in, like when they smoke on the They lower floor, they smoke down. If they no, smoke on the higher floor, they smoke up. that way. they do ये सोच smoke, रहा but like Hey, सबका क्यों? Why are you throwing them under the bus, bro? Anyway, Ishan, take care. No, no. सुरेश तू मरवाएगा उसका सब दोस्तों सबको मरवाएगा इधर कितना कैजुअली पूछा अरे और आंसर भी दे रहे ऑलराइट चलो चलो नहीं, मतलब ईशान स्मोकिंग हाँ वही इंजूरियस टू हेल्थ, तो या बैक वही में भी वही सिगरेट आता है. सिगरेट चलो या टेक केयर ईशान हैव अ गुड ओके, वन बाय. बाय ब्रो चलो ठीक है. Thank you so much for चीयर्स taking me. चीयर्स टेक केयर Thank you. ईशान. अभी Okay. बी गुड. Bye. बाय. सुरेश कितना बड़ा हरामी है तो Oh God, ये टाइम कितना निकल गया भाई? Only 20 minutes left for the stream to end. Now this will be the That was longest 20 मजेदार. minutes of your life. मजेदार. That वो But I मौसम्बी had an and all. explanation. I हाँ. had an explanation. Yeah, Musambi, क्या No क्या no. अलग-अलग चीज. So It इसका started explanation. off with तुम भी जलो, Where हम to भी where? जले. इसका क्या है? Anyways, What are you इसका saying? क्या explain? I feel that they were seeing basically ये लोग तीनों ही है और लोग तीनों एक दूसरे का फॉर्म्स देख रहे हैं रात को घूमते वक्त. करेक्ट. तो I feel बैंगलोर में इस जगह पे एलियंस आ चुके हैं. Oh, they've picked up the transmitter. So 1111. correct, and they 1111. Sorry, I'm just wishing for something. Oh, you scared me there. I was like, why are you doing that for 1111? हाँ. At 1111 you're supposed to just अपना wish अपने मन में डाल दो. You're such a lunatic. But so Suresh, I was just thinking सब लाइट वाइट बंद रखोगे घर पे तो ऐसा ही होगा ना. They must be all moving from this side to that side अंधेरे में. But it can't be possible कि तीनों साथ में घूम रहा है और एक अंदर ही सोया पड़ा है ना. तो obviously aliens are taking their forms and fooling around with them. Correct. That is the only logical explanation. What else could it be? And aliens have already arrived. I know that. You know that. Like this, Yes. I know that. कितना confidence के साथ. I would like to take a moment in time Hello, hi, to how say, are you? ooh, hi Suresh ji. Hi. Now, परिणीति चोकरा. now the craziest thing every time I see वो Instagram reels पे ना सब hey Vidya. If you've seen the reel, then you know what comes after that. Hey Vidya, ये bat का grip ना. People are making memes out of that. छोड़ो जिसको पता है उनको पता है. अभी हम क्या कर सकते हैं. बट सुरेश जी कितना मस्त लग रहे हैं आप. मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको. और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप बार बार आते हैं और आप इतने अच्छे इंसान हो इसलिए इसकी वजह से. Oh, in celebrious Dityam. Yeah, this is a weak man. See. Wow. Just scared someone like that. Imagine doing that on the street. Wow, Suresh. Looking like Mega Mind now. Your brain is just going crazy. Alright, but मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको ये स्ट्रीम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करने का. मैंने नोटिस किया कि हमारे मॉड्स जयदीप वगैरह वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हिट लाइक. उनकी बातों में मत आना. किसी के बातों में मत आना. अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो. प्लीज़ लाइक कर दो. अगर फिर आपको अंदर से वो फीलिंग आया तो कर दो. अब किसी ने बोला कि हे लाइक कर दो प्लीज़ कर दो ना आप प्लीज़ विल हेल्प मी एंड ऑल. मत करो. कोई कंपल्शन नहीं है किसी को हेल्प करने के. यश थैंक यू सो मच. यश 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 रहने दो. Anyway, thank you so much यश. वेरी स्वीट ऑफ यू. एंड जैसे कि मैंने कहा अगर आपको फीलिंग आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो. आपको पता है लाइक सब्सक्राइब वैसे तो ये सब एक ही टीयर मतलब गॉड लेवल टीयर पे है. बट लाइक सब्सक्राइब कमेंट. हे वीडिया. Yes. Hey, Vidya. लाइक सब्सक्राइब कमेंट ऊपर लेवल पे तो आप कर सकते हैं. एक्चुअली सब्सक्राइब भी ऊपर है तो करो आप. जो आपका अंदर वो फीलिंग आया आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ली बाबा. हाँ तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं तेजी से. इट्स अंजलि नगर. अरे she came and she तूने सरनेम बराबर से भड़क गई.
बट मेरे को कैसा पता चलेगा एग्जैक्टली? मेरा खुद का सरनेम देखो, कौवा को क्या, कौवा को खाना खिलाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी, डॉली बिंद्रा's voice and all, I can't get it now. थोड़ा आजकल मैं लेम हो गया ना। ओ ओह सर, एक सेकंड ना, yeah, अभिराज आपको लेकर आते हैं अंदर, लेकिन जयपुर पहले एक्सपीरियंस। सिल्वान फर्नांडिस, Hello, क्या hi. ये Hi. हाय 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 अभिराज, एक सेकंड ना, सिल्वान फर्नांडिस बोलते, क्या ये असली रुपया है? लव यू जोशी जी, सुरेश सर, सीरियल वापस आओ, सीरियल, हमारा सीरियल वापस आएगा। अरे कैसे एको हो गया? वो नहीं आया, वो बंद किया। Oh no, Abhiraj is हाँ got अभिराज, the live stream on. That's why. अभिराज वेलकम बड़ी, Hi, hi. गुड टू हैव So यू ऑन, I'll just get right to the story. प्लीज सर। Um, I'd rate it. I'd say it's a personal experience. So I'm not sure if it's scary, but yeah, I felt scared डिस्कनेक्ट, when I was हाँ there. So I'd rate it around 6 out of 10 maybe. ठीक है, So it happened with me in Jaipur, and so this is in 2017, 2018, 2018, ओके 2019. And so I was staying at this guest house at a company guest house in the city. It was it was like close to the center, not very far off. And the guest house was made right in front of a graveyard. So the guest house the guest house were at the end of the road, and then there was a graveyard right next to the guest house. So the first time I stayed in the guest house, I reached there. I was very exhausted. It was a daytime, and I kept my bags and everything at a place and slept. Like my footwear was on one side of the bed, and I slept. The time I woke up, I saw my footwear. They moved to the other side of the bed. I mean, two possibilities. I could either be sleepwalking, or it could be something paranormal. I mean, reasonably, I could be sleepwalking, but yeah, that was the first और scary it thing that slipped your happened. mind, Probably, yeah. I was too tired. Yeah. ठीक है, So that was the first instance that happened. The next time when I went to Jaipur, I stayed at the same guest house, and what happened was I reached the guest house very late. It was around 10 or 12 in the night, and so there was a gate, there was a guard's house, the guard room when you enter the gate, and the guest house was of 2 floors. There was one balcony which was coming right out of the front of the house, which could be seen from the guard room, if you can imagine. So as soon as I reached the guard's room, I saw this lady walking on that balcony, and I went to the guard room. I saw the lady. I knocked at the guard's window to open the door, open the gate, and the instant I saw at the balcony again, there was nobody there. And she was an old lady, and and I went to the caretaker. I asked if someone's staying. He was like, "No, there's nobody on the floor, on the," and that was one creepy thing that like kind of shook me a lot. So yeah, that's the story. so you you saw a saw lady who somebody. disappeared real quick, In a second, in an instant, like as soon as I knocked and And I that was an saw old that there was lady. no one. Yeah, she was 40, in her late 40s, looked like. Okay. the fuck, Yeah, late 40s, that not was old, but anyway, Yeah. so me and Suresh have had similar experiences, but we had gone for speed dating. So anyway, Aviraj, yeah. interesting story. It could have been anything. Could have been the way the light happened, or maybe there was a I lady could be who's into hallucinating, yeah, parkour. but yes, I did see a lady out there. I Parkour! mean, I can She jumps vouch for jumps from the first floor to hide from you. So how long that. did you stay there? Did you leave I that stayed place for the quickly? few days, 2 to 3 days. I Okay. mean, yeah, it was spooky. That's it. I mean, as I remember, it wasn't scary in the moment, but yeah, when I remember it, it was spooky. It is. It is. Interesting. So Certainly usually I it do a is. poll, but I didn't get a chance to type this one out because I was laughing. But
Do you guys think that Abhiraj saw a real old lady? Oh, that's option A. Option B, was it a ghost? Or option C, again, it was Suresh shooting something in the vicinity, and he Why? usually Why? cross dresses. So this is a quite ho sakta hai ye. Abhiraj, thanks for sharing that with us. Thank you. Have a Good good night. one. Paco! Huh? Imagining somebody just jumping from the first floor. Parkour. Parkour. What did you say just now? It Parkour. sounded parkour. You say it like that in the office. Parkour. Oh, Yeah, a lot of ghost stories are also just people getting scared of old ladies. This is kind of wrong not getting scared. sometimes. He saw some. Obviously, Yeah, you're yeah. scared if you see someone that. And it's very strange. 40s and not late 40s, not old, by the way. So Anyway. look, Huh. something it's crazy. It's crazy how things that happen in my life kind of Oh, relate to what's Sakshi. happening here. Sakshi Rajkumar is saying, is this the LIC guest house in Jaipur? Abhiraj, if you're still ये there, कोई please कुछ भी बोल सकते हैं. reply But to this. क्यों Suresh, नहीं listen यार? to this. You know, Hmm. outside this window here, right now, this lane, it's not a lane really. It's off the main road. It's relatively peaceful here. I'm not even kidding. Okay, at 4 in the morning, 4. Usually people, like, you know how it is in Mumbai, right, Suresh? And nobody's ever really sleeping. But between 2 and 4, there's a couple of hours where I won't see too many people, and then before and after, lots of people are. But at 4 in the morning, I saw an old lady walking by over here. Now, I mean, there are a lot of senior citizens living around this area over here, and they're usually out a little later than that. 4 o'clock, there's no reason to be out because even the shops are closed. Maybe she was just taking So a walk. I don't know what happened. Did But she I don't look know up at but it you? was not a ghost. It was a But real how do you person. know? What if that person had turned to look at you and there were no eyes, just only black? Thank you, Suresh. I had an apple in my hand, so I threw it on her at that time. And it hit her. And she's like, hey, kaun hai? So then I knew it was a real person. I did not do that. Oh, upper stream में that they're walking past Bandra and they got hit by something, by a fruit. Okay, here we go. Last story for the night. भाई बहन लोग, अगर आपको मजा आया तो whatever you're watching at that time, hit like and subscribe to whatever that thing is that जिसने आपको मजा दिया. और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ. तो अगर आपको मजा आया तो please don't forget to hit like and subscribe to good channels and this stream as well. Doing the thank yous in advance, Harami chat, all you people over here. Let's move on to our next caller. All right, Suresh ji. मैं तो nervous हुआ, पता नहीं क्यों. Bandra mataris नहीं रे. क्या बोल Bangalore. रहा था? 4 AM थोड़ा जल्दी है बाबा. अरे 4 AM. साक्षी इसका 4:30 ठीक है. No, that is Sakshi Rajkumar. I used to live nearby, never experienced it. What was I doing at 4 AM at the window? Very good Oh, question. yeah. Oh, you must have been playing games. What else? I don't leave बीच games at में the window. नहीं विंडो तो उठ के थोड़ा बैक I रेस्ट just के when लिए I सब stood there, एक्सरसाइज my करने के लिए. door is Yeah. open here. I just stood there. I didn't have to go Yeah. all the way. इधर से दिखता है भाई. Nice try. Yeah. I do frequent trips to my window as an old man. I just go to my window and look. Yes. Mandav ka last Yash. super chat. See you next कितना weekend, guys. Yash. $2.20. 23. साक्षी जी नहीं है इस वक्त. नहीं है. साक्षी जी आप है कि नहीं है? नहीं है. बिल्कुल उनका नहीं. ऑडियो तो नहीं है. साक्षी जी वीडियो भी नहीं है. सुपर चैट मिस शेफाली खान. आप दूसरा स्ट्रीम में दोगे तो सुपर चैट में इधर कैसे पड़ेगा? हाँ? वही देखा नहीं. आई एक सेकंड. नहीं मिस नहीं हुआ. कभी मिस नहीं हुआ. मैं पिक्चर लेता हूँ. आपने देखा ही होगा. Let me just read the super chats real quick. Don't be scared. दीप्ति पी बोलते कंपल्शन नहीं था फिर भी सुपर चैट. कितना स्वीट रे वीडियो. कितना Did स्वीट. something just pass by मेरे स्क्रीन में? मैं नीचे देख रहा था. मेरे को पता नहीं. शिफाली खान से हाँ किसी का पाए किसी का खाना ये चीज क्या है सुरेश जी बताना.
It's a riddle. क्या? Suresh, we're being attacked by the Riddler and you're क्या Batman. क्या? Tell me. किसी का पाए किसी का खाना, ये चीज क्या है सुरेश जी बताना. किसी का पाए किसी का खाना, ये चीज क्या है? सुरेश जी बताना. I thought you said Suresh ji banana. But batana. Anyway, anybody knows the answer, please leave it in the comment It's a section. pie. What comments people leave over here? Sakshi ji, आपका टाइम समाप्त यहीं पे होता है. Suresh will be thinking about that for the next 3 years. My eyebrows. मैं घर पे ही करता हूँ. No, this is चाकू my के AC साथ. का. I felt somebody went past like this. I'm Pariniti's brother. परितोष. हाय. क्या इंटेंशन है ओए, आपका मेरा hi. सिस्टर के लिए? What? You said you कुछ आपको नहीं. शादी करना था? हैं मैं? नहीं. मेरे को मारा गए. मेरे को मार के लाएगा रे राजा. मेरे को बोत बन के आना पड़ेगा रे फिर बाद में. Next person. ये क्या है ये? क्या है ये? फर्नीचर हिलना शुरू किया वापस. फर्नीचर? वो गैस रहेगा सुरेश तुम्हारा. अरे sometimes these moths keep flying around and I confuse them for mosquitoes. मैं पूछ अरे बैंड्रा में इतना बड़ा मस्कीटो रहता है क्या? रहता है. थैंक यू शांतनु. चरित्र जी. नहीं. तो क्लासरूम में था? नहीं. हेलो. चुपो मत, आपको देख लिया हमने ऑलरेडी. क्या कर रहे हैं आप? ये शर्मा रहा है. He's like, नहीं. रंजन यार, विराट का रन रेट के बारे में क्या बताऊंगा यार. What is that? रोहित को देख क्या हुआ. I didn't realize. I didn't think RCB would lose today, but their same problem persisting for so many years is कि उनके bowlers है ही नहीं. That's कोई the भी beauty ढंग of का bowler cricket है ना. नहीं. You don't know क्या होने वाला है. कुछ भी हो सकता है. लेकिन उनका bowling attack बहुत. Suresh, you remember the days of Test cricket, na? इधर because of no, don't please. उज्जवल, हाँ. You remember the days of Test cricket, na? That's still By the third best day, form you of knew who cricket. was winning. ऐसा नहीं है. उज्जवल जी. So much of fun. अरे उज्जवल जी, आप पहले भी आए थे. Welcome, sir. And you left us one sweet message and all. I hope it was a pleasurable experience being on this nonsense stream. No, it was not nonsense by far. Just wait for a second. Let me just light up the room. Oh, the room. Hi. Thank God. Hi. This is my child's toy room. So, hi, how are you? चल रहा है अभी. क्या बताऊं? पीठ में दर्द. Very well. Thank you, Joel. Thank you, Sarajji. Thank you. Okay, fine. Let me just start सुनाइए. this brief, very brief story ठीक है. that I have. While we were studying dentistry, we had we have to be affiliated to a medical college also, है ना? So we had a small medical college in our own place, and we witnessed a very horrific accident in the afternoon while we were taking chai from a tapri across the road. You know how colleges are; they are organized like that. Ki you have small chai tapris and dhabas. Correct. They're usually along the highways and. Ujjwal, just in case if the story's got some gore, I just want to tell you your daughter's behind. Yes. Thank you so much. She sneaked up on you. They're like ghosts sometimes. She just came because I was just lying down with her and. Dada's coming, okay? Dada's coming in 2 minutes. Shambhavi, please. Be with Mama. Okay? He's just doing his taxes. That's the excuse I use. I'm not smart enough to do that. I'm a doctor. Had I been that smart, I would have been here. Okay, fine. Anyhow, so what happened was, me and my very good friend Manish, we were the witness to that accident. What happened was, sorry, my headphone keeps falling off. No problem. What happened was, we were witness to this horrific accident that
a car on the Ghaziabad Meerut highway. It was driving very erratically, and a person who was driving on a two-wheeler, it just tipped over the front wheel of a two-wheeler and just broke the wheel off. And the person just fell off without any support. Because he fell off, and fortunately for him, he fell off in front of a hospital. Wow. Can you hear That's me? some good luck Yeah, and yeah. bad luck at the same time. Yeah. If it had to be a good luck, it was good luck at the right time and right place. So we were all inclusive कि चलो चलते हैं, लेके चलते हैं. We secured his vehicle also. We took him to the hospital and we admitted him also. And we told him कि क्योंकि हमने उठा के देखा उसको, तो हमको पता चल गया कि it was a femoral fracture. The upper thigh, this one, this bone, it got broke, right? तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा करके हुआ है, तो आप चाहें तो अभी इमीडिएटली आप सर्जरी में जा सकते हैं करके. बट दे हैड सम अदर प्रेफरेंसेस. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक बार घर पे बात करता हूँ और वो वहां पे कराता हूँ करके. ठीक है. उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका जो ऑर्थोपेडिक है वो शाम तक आएगा, तो हम तब तक देखते हैं, या एम्बुलेंस भेजेगा वो, हम तब तक देखते हैं. ओके फाइन. तो बट ब्लड लॉस वाज अ लॉट बिकॉज बोन इंजरीज हैव a massive blood loss, right? तो हमने बोला ठीक है, जो भी है, हम we went off. ठीक है, we have given him off to the proper authorities, and proper doctors are taking care of them, and he has been informed to the family and all. तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता. तो शाम को हमने खाना खाया, मैं और मनीष दोनों वापस गए देखने के लिए. And by that, because it was a hospital, accidents kept on coming, and because it was right by the highway, accidents kept on coming. कि ऐसा होता रहता था कि कभी कोई आ रहा है, जा रहा है, ठीक हो रहा है, जो भी है. तो we were used to this. तो हमने बोला कि यार एक बार देख के आते हैं कि how is that guy. तो the attendant who was there, नाइट टाइम में थोड़े कम हो जाते हैं, स्टाफ को ना कट डाउन कर देते हैं कि कॉस्ट कट डाउन बोलते हैं, या पेशेंट के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं लोग. तो हमने पूछा, वी न्यू ऑल ऑफ देम, मॉर्निंग वाले, इवनिंग वाले, हमको सब पता थे बिकॉज हमारी ड्यूटी सुबह शाम की लगती रहती थी. तो वी आस्क्ड कि अरे वो दिन में एक वो आया था फीमर फ्रैक्चर वाला, तो वो कहाँ पे है. उसने बोला वो अभी इमरजेंसी में ही है. एंड वी गॉट स्टार्टेड कि अभी ये तक इमरजेंसी में है, मतलब उसको लेने नहीं आया क्या. Because he should have been transferred at least to an ICU or some kind of an orthopedic institution. कि यहाँ से तो गाजियाबाद तक तो जाने में कितना देर लगता है, आधा घंटा लगता है. He should have been transferred. तो बोला नहीं, उनको कोई लेने नहीं आया, तो हमने उनको अभी ICU में इमरजेंसी में ही रखा हुआ. ओके फाइन. तो मैं और मनीष बड़े परेशान हुए, मेरे फ्रेंड. हमने बोला, जाके देखा, मैंने कहा कि यार इसका तो, एंड this is actually what do you call that, trigger warning. Trigger warning. Yes, it is a trigger warning. Okay. And this really keeps me up at night sometimes. We went to the emergency ward, and there was this person lying there, and we went in there and we saw, and we thought, yes, he had a femoral fracture, and it was a compound fracture. Compound fracture means the bone was coming Doing out maths. from the skin. Yeah, it was coming out of the skin, but the bone was also coming out from his hand. So we, as an observant people, we said कि हमने attended, although they look the same with the beard and all, you know how bearded people look almost the same. तो हमने बोला कि यार ये वो बंदा नहीं है यार, हमारा तो केस अलग था, उसको ऊपर चोट नहीं लगी थी, उसको नीचे चोट लगी थी. उसने बोला नहीं यही है. एंड ओके फाइन, देन ही लेफ्ट अस एंड वी सॉ द आइरिस मूवमेंट. जैसे लाइट डालते हैं तो आइरिस का मूवमेंट होता है, लाइट डाला तो आइरिस मूव कर रहा है, कि ही स्टिल अलाइव, राइट. तो आई थॉट कि अच्छा ठीक. फिर एक डॉक्टर आया
और अटेंडी, हमने उसको बोला कि यार ये तो अब इसका सर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? कहता नहीं, ही इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड डेड, योर पेशेंट इज अपस्टेयर्स. And we were like white, all the blood they drained out of our faces. Oh shit. Please, we did not even bother to go up to the first floor. We called and checked. हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम ऊपर जाएं और पूछें उनसे कि वो ऊपर हैं कि नहीं. हमने फोन किया और वो पता चला कि वो 6-7 बजे एम्बुलेंस में लेके जा चुके थे उनको. This is not a good thing. I'm sorry, but That's freaky, man. आज का थीम था कि वो बहुत पहले मर चुका था. That's the theme. वो बहुत पहले मर चुका था and we were still under this impression कि हम इसको कैसे बचाएंगे करके. Shit. और हमको एकदम से ये रियलाइज हुआ कि यार मतलब with all that motivation that we left our food halfway and we left our homework and left our projects out there कि चल यार देख के आते हैं कि whether somebody came from his family or something like that, and he had already been taken care of, but we were looking at some other one. The good news. But if you saw the iris ka movement, so did you all check him again to see if he's okay? No, we did tell the physician also कि सर को iris का movement मिला, but you know what कि हमने जब उसको ये किया कि आयरिस का मूवमेंट हो रहा था, उसके 15 मिनट बाद जब सर ने किया तो वो नहीं हुआ. तो आई थिंक ही वाज मिसडायग्नोज्ड इन द सेंस कि 15 मिनट पहले तक कुछ ब्रेन एक्टिविटी रहा होगा उसका और maybe the residual brain activity wore off. See, if this whole ghost thing and all is true, then the good thing is that you guys were trying so hard so that ghost will be like, इन लोग को नहीं मार डालते हैं, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. So good stuff. You are working so hard, Jose, to twist it that way. Just helping people. That's my job. Ujjwal, thanks for sharing that story. Thank you, Jose. Thank you, Suresh. Cheers, bro. Bye bye. Bless you once again. God Thank you. bless Thank you so much. Keep on doing the good work. Thank you. Thank you. So just like the viewers, we are also relieved that this stream is over for this time. We'll come back really? next week to torture you. मेरी It was a lot of fun फाट today. गई थोड़ी देर के लिए. क्या? मेरी तो फाट गई थोड़ी देर के लिए. Okay. Sorry to people who are still in the waiting room. It's like some relatives of mine. I'm very sorry. Yeah. We'll bring you on next week. What did you think of that story? Drop your comments in the comment section, of course. और किधर डाल सकते हैं? Correct? When people say leave a comment in the comment section, थोड़ी ना किधर और डाल सकते हैं. बम्बू थोड़ी ना. Sorry, क्या? Anyway, Suresh, always pleasure doing this with you. Yes, I was just going to say that the Discord link has been dropped by Jaideep, our mod. You can come over to our Discord server, just hang out, we count numbers. There's like one channel where people discuss 3D printing. There's one channel I discovered, I forgot that I had made it only, where we recommend great music and stuff. Me, mostly. So it's all my... Okay. Anyway, Suresh, it's always great when you back me up. I'm going to go for it. Here we go. Ladies and gentlemen, Suresh Menon. Oh yeah, baby. Suresh Menon. Hoezaay, Talia. Hey, by the way, I'm going to be back on Sora Fun stream on Monday with recording with him. Without again. me and Cyril. Oh, he didn't call you? You know? Oh. इसकी माँ का सौरभ सारा I तेरे को said देख yes. लेगा सौरभ. I said yes only for the alcohol. Sorry, that what it? Very funny. You're doing 3 drinks now again? Yeah. He's like वो होजे को नहीं लेके आते, वो आधा पाइट लेके वो नष्ट हो जाता है, रहने दो. I don't know. I'm surprised I didn't call you. I'll have to take this up. And if you're there somewhere watching a Saurabh, you heard this from me and Hoezaay. ठीक है, मैंने भी कोई दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेट किया है. उनके इंस्टाग्राम पे आएगा कल वीडियो, तो ठीक है. Thank you, Campfire Stories. I think, Suresh, we should see other people. Hey, Vishal, take it easy. I'll see you soon. Oh, I thought you were going to say Vishal.
I said we should see other Vishal. people. I thought you said Vishal. Talking to Vishal. Anyway, that's it. Tonight's stream. Yahi pe khatam. Big thank you to everyone who joined us over here. Don't forget to come over to our Discord server. Thank you, mods. Thank you, Harami Log. Thank you to all the people dropping those ridiculous jokes. Somebody cracked a very ridiculous joke in between. It was Joke. I couldn't read it out loud, but it was mad funny. You know who you are. Actually, you don't know. Haha, so many messages. Go to Suresh Menon's Instagram. ट्विटर पे इनको गाली दो, इंस्टाग्राम पे प्यार, यूट्यूब चैनल जाके देख लीजिए. It looks like someone's hacked his account, but he's just uploading a lot of movies there. Go leave some comments, leave some likes and stuff. And सिरिल के इंस्टाग्राम पे जाके बोलो ये हो गया कि नहीं शादी, जल्दी आ वापस, we are waiting for you. सिरिल का शादी है? नहीं वो is planning. अच्छा. And anything else, सुरेश? कुछ और बाकी है? और बस मैं अभी मेरा चैनल का लिंक तुम्हारा उधर डालते हैं. कैसे डालेंगे? Yeah. Have a good weekend, everyone. I hope you enjoyed tonight's stream. If you did, you know what to do. गैस बंद रखने का, माई बाप से प्यार करने का, वॉचमैन को प्यार देने का, आराम से सोने का, भूत पीत के बारे में सोचने का नहीं, भूत को अपनी बाइक की तरह रखने का, भूत को खाना वाना खिलाने का, संडास का टैप बंद करने का, और फ्लश हमेशा मार के सोने का. नहीं तो क्या श्रीलंका घूमता धोने रहेगा. का नहीं, सिर्फ सीधा सोने का. धोना भी चाहिए. हाथ से धोने का, साबुन से धोने का, डेटॉल लगा के धोने का. सर मैं बटन दबाने वाला हूँ. थैंक यू. बटन भी दबाइए. गुड नाइट. I purposely pretended like we were ending. Suresh, I didn't switch over to the other graphics. I just want to show people what happens when the graphics are playing. What we are doing. You're just sitting here like... What a rascal you are. Okay. Chal, bye everyone. Have a good night.